Krishna ताकि हम गुरु और कृष्ण को and the devotees, और भक्तों को, then Krishna will be pleased with us, तब कृष्ण हमसे सुखी होंगे and he may manifest himself in our hearts and mind and consciousness. और फिर हो सकता है वो हमारे हृदय, हमारी मन, हमारी चेतना में प्रकट हो। And Krishna says to show special mercy to my devotees, or those who want to be my devotee, I destroy all the tamagun, all of the ignorance, all of the suffering. और कृष्ण बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त बनना चाहते हैं, तो उनकी हृदय से मैं सारा तमोगुण, सारा अंधकार नष्ट करता हूँ। And he gives us transcendental knowledge, realization of the Shuddha Sattva, transcendental platform. और भगवान हमें दिव्य ज्ञान देते हैं जो दिव्य स्तर, शुद्ध सत्व स्तर से आता है। So first we need a lot of purification. तो पहले हमें बहुत सारा शुद्धिकरण चाहिए। That requires a lot of mercy. और इसके लिए बहुत सी कृपा चाहिए। Mercy of Krishna, mercy of Guru, कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा, mercy of Shastra, और शास्त्र की mercy कृपा, of the Vaishnava devotees. और वैष्णव और भक्तों की कृपा। Everything is based on mercy. Mercy like petrol is the fuel. सभी कुछ कृपा पे आधारित है। ये कृपा पेट्रोल के जैसा है, ईंधन की तरह। First thing is we have to cleanse this contaminated consciousness with so much ignorance and sinful desires and gods and sinful reactions like Himalayan mountains. तो सबसे पहली चीज हमें ये सारे अनर्थों को, कलमशों को साफ करना है, शुद्ध करना है। We must realize that that is the reality of our condition. और हमें ये जानना होगा कि हमारी ये सच्चाई है। That our hearts and minds consciousness completely polluted, contaminated. हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी चेतना पूरी तरह से दूषित है, पूरी तरह कलमशों से भरा है। Instead of in a healthy way wanting to surrender and serve Krishna, we're in a very dysfunctional way trying to avoid that and then instead becoming servants of Maya. तो स्वस्थ होने के बजाय और सही तरीके से कार्य करने के बजाय कृष्ण को शरणागत करने के बजाय हम माया को शरणागत करते हैं। So we are rather contaminating and sabotaging ourselves. तो हम अपने आप को और ज़्यादा दूषित कर रहे हैं और अपने आप का विनाश कर रहे हैं। We're becoming killers of our own soul. और हम अपनी ही आत्मा की हत्या कर रहे हैं। So we must realize all of that. तो ये सब आपको जानना चाहिए। I want to solve it, I want to get out of that type of condition. और इसको समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। And we must, as devotee, want to be devotee means we have to clean all of this thing up. Clean it up and clean it out. अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें इसे सारा कुछ साफ करने की जरूरत है या सब बाहर निकालने की जरूरत है। And Krishna Katha, Krishna Nam is not different from Krishna. Krishna is purest of the pure. और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम ये कृष्ण से अभिन्न है और ये सबसे शुद्धतम विशुद्ध है। If we're not sincere and serious in purpose of our hearing and chanting, then Krishna will not manifest in that katha or in that name. अगर हम एकनिष्ठ नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं, हमारे श्रवण और कीर्तन में तो कृष्ण उस कथा में प्रकट नहीं होंगे। Then it will just be blank fire, external only. तो ये केवल खाली बंदूक की तरह चलेगा, केवल बाहरी It will not be effective. और ये प्रभावकारी नहीं होगा। It's like taking capsules, medicine capsules, and you're taking the capsule, but no medicine is inside of it. जैसे आपको ये कैप्सूल ले रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, लेकिन कैप्सूल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। I took the medicine this morning. 3 times today I took the capsules. आज सुबह मैंने दवा ली है, 3 बार मैंने कैप्सूल लिया आज के दिन। But if you see, okay, there's no effect, then what type of capsule is this? लेकिन अगर आप ये देख पा रहे हैं, आपके अंदर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो ये किस तरह का कैप्सूल है? Right, doctor gives you medicine, you don't know what it is, you're trusting him, you're trusting the medicine, and then you're taking, and then you see nothing happening, nothing changing, that means it's a problem. तो आपने दवा ली है, डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके, और आपको पता नहीं दवा के अंदर क्या है, ना कुछ काम हो रहा है, It's not effective. ये कुछ प्रभाव नहीं कर But रहा you judge by the results. तो बात कर रहे हैं, आप फल के आधार पर निर्णय कर सकते हैं। So Krishna, he is the purifying, the purest of the pure. If he does not manifest in that Harikatha, Krishna Katha, Krishna Nam, there is no purification of the heart, mind, and consciousness. तो कृष्ण के जो सभी वो शुद्ध करने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो हरिकथा कृष्ण में प्रकट नहीं होंगे तो कोई प्रभाव नहीं दिखता। That's why it says if you chant, you hear and chant in an offensive manner,
then you cannot get the benefit. इसलिए कहते हैं अगर आप श्रवण कीर्तन करेंगे अपराधिक मानसिकता से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। And Radha Bhaktivinoda Thakur says, whatever your sinful things you are meditating and attached to, that's what you're going to end up getting. और श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं जितने भी पाप करने की इच्छाएं और जिससे से आसक्त हैं वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। That's why Prabhupada said you should chant and try to give up the offensive mentality. श्री प्रभुपाद बताते हैं आपको जब करना चाहिए लेकिन अपराध मानसिकता छोड़कर। That means sincere, serious hearing and chanting. इसका मतलब गंभीर एकनिष्ठ श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। And it has to be Krishna is the witness and the judge of our sincerity and seriousness, collectively. और कृष्ण हमारे एकनिष्ठता और गंभीरता के न्याय करता है। हम He's सभी in everybody's heart. He's a witness. वो हम सभी के हृदय में है तो वो गवाह है। And he's measuring the quantity and the quality of our spiritual desire or not. और वो माप रहे हैं हमारे आध्यात्मिक इच्छा की गुणवत्ता कितनी है और कितनी शक्ति है उसमें। We can think we're sincere and serious हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम बहुत गंभीर एकनिष्ठ हैं out of pride and sentimentality. दंभ में और भावुक हैं। But if the results do not match, that means that something is not adding up. लेकिन अगर हमें जो फल मिल रहे हैं वो हमारे अपेक्षा के आधार पर नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। So we have to be, if we're spending so much time and energy and resources and money to come here, to finally come here and meet together, then without us being sincere and serious in our hearing and chanting, Krishna doesn't manifest here, then what benefit will we get? अगर हम इतने समय शक्ति और सारी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ तक आने के लिए और एक साथ में मिलकर श्रवण कीर्तन अगर हम सही तरीके से नहीं करें तो कृष्ण यहाँ पर करता है। Just like we're chanting mechanically, not seriously, not sincerely, then what benefit we get by the chanting? जैसे हम मशीन की तरह अगर नाम ले भगवान का और गंभीर एकनिष्ठ होकर नहीं ले तो हमें क्या लाभ है उससे? It says if you don't give up the offenses, you can go on chanting for millions and millions of lifetimes and never get the benefit of that chanting. कहते हैं अगर आप करोड़ों जन्मों तक इस तरीके से मशीन की तरह नाम लेंगे तभी आपको कोई लाभ नहीं। So if we truly realize our heart, mind, and consciousness is contaminated, polluted, diseased state, and we want to fix that, we want to get out of that condition. अगर हम ये साक्षात्कार करते हैं कि हमारे हृदय मन चेतना पूरी तरह से कल्मशों से भरा है और हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं, हम इससे बाहर निकलना That चाहते हैं। requires genuine, sincere desire to surrender to Krishna. इसके लिए एक गंभीर एकनिष्ठ और गंभीर इच्छा चाहिए कृष्ण को A समर्पण genuine, करने की और उसकी sincere सेवा करने desire to want to hear and chant about Krishna, की। और एक गंभीर एकनिष्ठ इच्छा की जरूरत है कि आप कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहते which is the prescribed method, especially in this Kali Yuga for the most unqualified people, how to get mercy. हैं। और ये विशेष करके एक दिया गया सुझाव है विशेष करके कलियुग में जिनके पास मुश्किल से ही कोई योग्यता है। So that it may enter somehow or other into our ear or heart consciousness. तो हो सकता है किसी तरह से ये हमारे कानों में हमारे हृदय में हमारी चेतना में ये शब्द प्रवेश कर पाए। So that's why the speaker and the hearers, they must be qualified. They must be acting in a qualified manner. इसीलिए प्रवक्ता को श्रोता को दोनों को योग्यवान होना होगा। इस तरीके से कम कार्य करना होगा कि वो योग्यवान बन सके। And that means Krishna's measuring how sincere really are we, इसका मतलब कृष्ण ये माप रहे हैं कि हम असल में कितने गंभीर and how serious really are we हम असल में कितने गंभीर to want to really surrender to Him. असल में कृष्ण को शरणागत करें। And Krishna says, if that's there, then I'll give you intelligence and faith and understanding and mercy, purification, how to get there. और कृष्ण कहते हैं अगर ये वहाँ मौजूद है तो मैं आपको श्रद्धा दूंगा, बुद्धि दूंगा, शक्ति दूंगा, कृपा दूंगा ताकि आप So अपने Prabhupada's whole program, Mahaprabhu's whole program, it doesn't matter where you are in Daivi Varnashram system. तो प्रभुपाद का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये फर्क नहीं पड़ता कि आप दैवी वर्णाश्रम में कौन से स्थान पे हैं। Whether you're rich or you're poor, आप अमीर हैं या गरीब, old or young, जवान या man or बूढ़े, lady, स्त्री या पुरुष, educated, not educated, doesn't matter. पढ़े लिखे या अनपढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता। Right? Every soul is equal in the eye of God. हर एक जीवात्मा भगवान की नजरों में We समान are all His children. और हम सभी भगवान के He's संतान trying हैं। to come and help all of us. और भगवान हम सभी की मदद Every करने के soul लिए is Satchidananda Vigraha. और हर एक जीवात्मा सच्चिदानंद विग्रह है। And we just have different levels of contaminated disease consciousness covering our souls. और सभी की अलग अलग स्तर की चेतना है, दूषित चेतना है और ये आत्मा की बीमारी है।
type of false ego. अलग-अलग तरह का मिथ्या अहंकार है। All of that has to get purified. तो इन सभी चीजों को शुद्ध करने की जरूरत है। And Krishna, only Krishna can do that. और केवल कृष्ण He is ही the कर सकते purest of the pure. हैं। वो सबसे शुद्धतम में शुद्ध है। Prabhupada, just like the sun, Prabhupada said, just like the sun can purify even the most disgusting, contaminated place. और जैसे सूर्य सबसे ज़्यादा कचरे वाले धरती की जगह को भी शुद्ध कर सकता है। So Krishna is like the sun, Maya is like the darkness. तो कृष्ण इस सूर्य के जैसे है और माया अंधकार की So जैसे। somehow or other, we can let Krishna in, तो अगर किसी भी तरीके से अगर हम कृष्ण को अपने भीतर pray प्रवेश for कर that देते हैं mercy, और उस कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं realizing what is our condition otherwise. और जानते हुए कि हमारी क्या स्थिति है That इसके बाद Krishna इसकी वजह just से causes mercy, then you'll purify our intelligence, mind, and senses, which are completely contaminated due to long association with this asat sangha. और कृष्ण अपनी कृपा देने के लिए हमारे इस दूषित मन बुद्धि इंद्रिय को शुद्ध करने के जो कि माया के साथ लंबे संग असत संग की वजह से दूषित हो चुका है। So Nityam Bhagavata Sevaya means every day hear and chant about Krishna. कहते हैं नित्यम भागवत से यानी कि प्रतिदिन कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करना। In many places, Prabhupada says Nityam Bhagavata Sevaya means constantly. और कई जगह पे श्री प्रभुपाद ने बताया है नित्यम भागवत सेवा का मतलब है निरंतर करना। So again, what is the quantity and the quality of our taking this medicine? That is the question. प्रश्न ये है कि ये दवा हम कितनी ज्यादा मात्रा में और कितनी गुणवत्ता के साथ We can have a great medicine, but if we're only taking not the whole prescription, it's also not going to be effective. हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छी दवा है लेकिन हम जो जिस तरीके से हमें लेने के लिए कहा गया है उस तरीके से पालन ना करें तो कोई लाभ नहीं। So this is an exacting science तो ये बिल्कुल एक सटीक विज्ञान है based on the art of hearing जो आधारित है श्रवण की कला के ऊपर। in order to receive that medicine of Harikatha, Krishna Katha, Krishna Nam. तो ये जो दवा है हरि कथा कृष्ण कथा कृष्ण नाम की दवा Somehow or other that has to penetrate. तो किसी भी तरीके से ये छेद करने की जरूरत It है। will have some, Prabhupada said it will have some effect even if you're not even conscious, you're just sitting there. बात कहते हैं आपके अंदर कुछ प्रभाव होगा हो सकता है आप अपने ध्यान पूर्वक ना सुन रहे हो वहाँ मौजूद हो Gradually, somehow or other, you'll get some kind of piety. तो धीरे-धीरे किसी तरह का पुण्य शुक्र की आपके अंदर जमा होती जाएगी। But if we are very serious about that hearing, लेकिन अगर हम बहुत गंभीर हैं and Prabhupada is perfectly anxious to know and understand the absolute truth, प्रभुपाद कहते हैं अगर हम पूर्ण रूप से व्याकुल हैं परम सत्य को जानने के and लिए seriously taking shelter of that hearing and chanting process, और हम बहुत ही गंभीरता से आश्रय ले रहे हैं श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया का then your advancement will be much faster, much quicker by the mercy of Lord Krishna. तो आपकी प्रगति बहुत तेजी से और बहुत जल्दी होगी गुरु और कृष्ण की कृपा से। That's the medicine. और ये है दवा। And Prabhupada said then the prasadam, Krishna Prasad, Jagannath Prasad is the diet. प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद ये आहार है। And this is the expert treatment program. प्रभुपाद कहते हैं ये है सबसे दक्ष निपुण How to कार्यक्रम purge the mad mind. कैसे इस पागल मन को शांत किया जा सकता So how much are we in the treatment program? है। हम कितना ज्यादा इस उपचार के कार्यक्रम में हैं। What is are we buying in? Are we heart, mind, and soul buying into the treatment program? क्या अपने हृदय मन और आत्मा के साथ हम इस उपचार के कार्यक्रम में करना चाहते हैं Or are we just casual visitors, या फिर हम बस इस तरह के दर्शक की तरह हैं listening out of मुलाकात करने curiosity, हम बस किसी जिज्ञासा को शांत करते or you have हैं nothing better to do? कि हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं खाई देते वहाँ पे And Krishna is the witness and the judge. और कृष्ण उसके गवाह है और उसके न्याय वही करेंगे। We're here, we're in Holy Dham, we'll get some benefit, no doubt, unless you're committing aparadh. कि हम यहाँ हैं धाम में हैं हमें कुछ लाभ मिलेगा कम से कम हम अपराध नहीं Unless करें। we're knowingly committing offenses, अगर हम जानबूझ कर कहीं अपराध नहीं करें then we'll be kicked out of the Dham तो हमें इस शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा because of the aparadh. हमारे अपराधों की There's वजह only so much the Lord is going to tolerate. से कि भगवान के विरोधी तक से नहीं। So it's very risky. We're in a very risky situation. तो हम बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में हैं। If we do everything nicely, by mercy of Guru Krishna, we can make rapid, nice advancement. तो अगर आप सही तरीके से करेंगे तो गुरु और कृष्ण की कृपा से आप बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। If we act whimsically and reckless, अगर आप अपने मन की इच्छा से करेंगे और अनदेखा करेंगे and चीजों go को on
consciously, purposefully committing aparadha, जानबूझकर पूरी चेतना के साथ अपराध करेंगे then the punishment is much greater. तो दंड बहुत भारी मिलेगा That's up to us. और ये हमारे ऊपर है But Krishna is always there with us. He's always the witness in our thought, our mind, whatever we're thinking, whatever we're desiring, whatever we're planning, everything. Krishna is not missing one thing. तो कृष्ण हमारे साथ मौजूद है हर एक हमारी इच्छा हमारा मन हमारे विचार हमारी योजनाएं हर एक चीज कुछ भी चीज भगवान मिस नहीं करते Don't think Krishna is not paying attention. तो आप सोचिए कि कृष्ण ध्यान नहीं दे रहे हैं Krishna knows everything. कृष्ण सब कुछ जान रहे हैं Body, mind, and soul. शरीर मन और आत्मा Thinking, feeling, and willing. क्या सोच रहे हैं क्या योजना बना रहे हैं And he's not only the witness, but he is the judge. तो वो केवल गवाह नहीं है वो And न्याय भी he's वही है giving us, and he will give us exactly what we deserve. और वो हमें दे रहे हैं और हमें वही मिल रहा है जिसकी हम लायक And whatever we're getting, that is what we deserve. और जो हमें मिल रहा है हम उसी के लायक हैं Good or bad, अच्छा या बुरा whether we realize it or not. हम उसको साक्षात्कार करें That's why God says you judge the thing by the results. उसको बात कहते हैं आप फल क्या था पे देने की So we can think we're sincere and serious and fully surrendered. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम गंभीर हैं निष्ठ हैं अपने कृष्ण को We're पूर्ण nice समर्पण people किया है because we love everybody. और हम बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि हम सभी लोगों से प्रेम करते हैं We may even be convinced of that. और हो सकता है हम इस बात को पूरी तरह से मानते हो स्वीकार But करते our results will tell one way or the other. हैं लेकिन हमारा फल हमें दिखा देगा So we have to be smart enough, conscious enough, scientific enough to measure the results. तो हमें बुद्धिमान होना होगा चतुर होना होगा और इस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से जानना होगा And कि to हमें क्या फल take मिलेगा personal responsibility for those results. और हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी हमें जो फल मिल रहा And है if it's not going properly, you're not satisfied with the results, it's no one else's fault except our own. अगर हम अपने फलों से संतुष्ट नहीं हैं तो इस फलों के लिए हमें किसी और को जिम्मेदार नहीं So we ठहराना must चाहिए take full responsibility. तो हमें पूरी जिम्मेदारी अपनी लेनी And चाहिए if somehow we're getting a nice result, अगर किसी तरह से हमें अच्छा फल मिल रहा है that because we're trying, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं then somehow or other Guru and Krishna are happy, satisfied with our efforts, किस तरह से गुरु कृष्ण हमारे प्रयासों से संतुष्ट हैं and और they सुखी shower हैं mercy on us, तो वो हमारे पर कृपा बरसा give सकते us हैं strength and intelligence, ability to be more properly situated. और वो हमें शक्ति बुद्धि और क्षमता दे सकते हैं ताकि हम और सही तरीके से Because we're trying to cooperate, क्योंकि हम सहयोग करने का trying प्रयास to कर रहे हैं sincerely surrender to the best of our ability. और एक निष्ठता से हम शरणागत करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी श्रेष्ठ भावना And से Krishna, he's the witness and the judge of that. और कृष्ण उसके गवाह है और वो उसका न्याय करता है And if we're sincere and serious, Krishna says, whatever you need, I'll make all arrangement for you. और कृष्ण बताते हैं अगर आप गंभीर हैं एक निष्ठ हैं तो मैं आपके लिए सारी I'll व्यवस्था give you करूंगा intelligence and faith, who to associate with, मैं आपको बुद्धि दूंगा श्रद्धा दूंगा आपको किनका संग करना what चाहिए information we should hear. और कौन सी जानकारी हमें सुननी चाहिए And that information and knowledge realization will help you to overcome all of the ignorance and the misunderstanding. और ये सारा जानकारी आपको सारी अज्ञानता से बाहर निकलने में मदद करेगा In this material world, this is the prison house. और ये भौतिक जगत ये कारागार है Everything and everyone here is defective, faulty. तो हर कोई और हर कुछ यहाँ त्रुटियों से दोषों से बना है Everyone is addicted to mental speculation. सभी को मनोधर्म करने की आदत है And we are caught up 99% of the time just listening to our stupid minds and feelings and emotions on the material body platform. 99.9% समय अपने मनोधर्म को सुनते हैं और भौतिक इच्छाओं को सुनते रहते हैं And then coming to so many so-called conclusions, और बहुत सारे अलग-अलग हम निष्कर्षों तक पहुंचते रहते and हैं then convincing ourselves and trying to convince others of those conclusions. और हम स्वयं को आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं दूसरे लोगों को आश्वस्त करने का And प्रयास करते everyone with their हैं feelings and emotions and opinions and conclusions are, you know, trying to convince everybody. It becomes a big mess, complete confusing, disturbing mess. और हम अन्य सभी लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं हमारी गलतफहमी के प्रति हमारे विचारों के प्रति हमारी समझ के प्रति कि वो सही है There's no truth in the material world. इस भौतिक जगत में कोई सत्य नहीं है So it's all lies, it's all mis and disinformation. सब कुछ झूठ है और सब कुछ गलत और दोषपूर्ण जानकारियां हैं And we're sitting there thinking we're smart enough to take all this data and information and
process it and understand it in an absolute and an effective way. और हम ये सोचते हैं कि बुद्धिमान है, चतुर है, कि जो भी जानकारी दी जा रही है हमें उसे हम सही तरीके से ग्रहण कर सकते हैं परम सत्य This के स्तर is पे। insanity ये सब पागलपन है that we think that we have the intelligence and ability to do that. कि हम ये सोचते हैं हमारे पास बुद्धि है और ये क्षमता है कि हम इसे ये कर सकते हैं। We can't even understand and digest what's happening in our own lives every day. तो हम ये भी पता नहीं लगा सकते या जानकारी नहीं पा सकते हमारे रोज के दिन में हमारे साथ क्या क्या To होता है। speak of the mind and the hearts and the consciousness of everybody else. तो किसी और के मन में क्षेत्रों में कितने में क्या हो रहा है ये पता लगा। And Maya has captured everybody's intelligence, mind and senses, and everybody is brainwashed by that. माया ने सबकी मन बुद्धि इंद्रिय को पकड़ कर रखा है और सभी लोग माया के प्रभाव में And it's just competing faulty ideas and arguing and fighting with competing faulty ideas. और सभी लोग बहसबाजी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद कर रहे हैं, गलत विचारों को लेकर। All based on sinful desires. और सब कुछ आधारित है पाप कर्म की इच्छाओं के So ऊपर। the whole thing is rooted in pure corruption. तो सब कुछ जड़ से भ्रष्ट है। So how can anything good come out of that? तो इसमें से कैसे कोई अच्छी चीज बाहर आ सकती है? And then it's so strange to understand that everyone is bewildered and confused in this world. तो फिर ये बात इतनी विचित्र क्यों है कि सभी इस भौतिक जगत में पूरी तरह से भ्रमित हैं? And then everyone's going to try to exhaust and try to understand what is it, because we think we have to manage our own life. और सभी लोग पूरी तरह से थके हुए हैं ये पता लगाने में कि हमारे जीवन के साथ में क्या करना है। We cannot even manage our own life. तो हम खुद के जीवन को भी व्यवस्थित We नहीं cannot कर even manage our own mind and senses. हम खुद के मन और इंद्रिय को भी व्यवस्थित We don't know what to do, what not to do. हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है और क्या What's good, what's bad, what's क्या right, अच्छा है, what's wrong. क्या बुरा, क्या गलत, क्या सही। What will benefit us, what will hurt us. क्या हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा और क्या हमारी मदद करेगा। Complete ignorance, foolishness. तो हम पूरी तरह से अज्ञानता में कार्य कर But रहे we हैं। think, no, I know. लेकिन हम सोचते हैं I can understand. I can figure it out. मैं समझ सकता हूँ, मैं पता लगा सकता I हूँ। got a plan. मेरे पास एक योजना है। Everybody's got a plan, सभी के पास कोई योजना है। right? One famous bhakti said, everybody's got a plan until you get hit in the face. एक बहुत प्रसिद्ध मुक्केबाज ने कहा है कि सभी के पास एक योजना होती है जब तक मुंह पे एक मुक्का नहीं पड़ता। Then when the reality of this world hits you right square in the face, तो इस जगत की सच्चाई जब सीधे आपके मुंह पे पड़ती है, again and again and again, you're just going onto the canvas, onto the floor. बार जो है आप जमीन पे गिरते हैं। Then it's just, when are we smart enough to admit defeat? That's the only question. तो प्रश्न ये है कि हम कब इतने बुद्धिमान होंगे कि हम अपनी हार स्वीकार करेंगे। That takes intelligence. इसके लिए बुद्धिमान की जरूरत है। And until then, we'll not surrender. और ये ना होने तक हम शरणागत नहीं करेंगे। And without surrender, we're victims of karma pala, और शरणागत नहीं करने पे हम कर्म फलों का हमें, which means birth, death, disease, and old age, उसका मतलब है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और threefold miseries. तीन तरह के भौतिक कष्ट। We're getting hammered by threefold miseries, तो हमें भारी प्रहार किया जाएगा तीन तरह के भौतिक। and we don't even realize it. और हम ये अनुभव नहीं कर पाते हैं। कहते हैं मैं ठीक I हूँ, feel fine, I'm happy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। So that means you're a premi bhakta, completely surrendered to Krishna. इसका मतलब आप प्रेमी भक्त हैं, जिसने कृष्ण को पूर्ण शरणागत किया है। And if that's true, then please accept my obeisances. अगर ये सत्य है, तो आप मेरा प्रणाम आपके लिए स्वीकार कीजिए। Say a prayer for me. और मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए। Give me your mercy. मुझे अपनी कृपा दीजिए। If we're not on that level, अगर हम उस स्तर पर नहीं हैं, and we're not completely surrendered to Guru Krishna, तो अगर हम पूर्ण तरीके से गुरु और कृष्ण को हम शरणागत then नहीं हैं, why do we not feel threefold miseries? तो क्यों हमें Why तीन can't we तरह not के perceive that? ताप महसूस नहीं हो पा रहे हैं, या क्यों हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? Falsiko, हमारे में क्या अहंकार की वजह से, ignorance, callousness, अज्ञानता की वजह से और जड़त्व की वजह से, madness, foolishness. पागलपन, मूर्खता। So it says ignorance is bliss, कहते हैं अज्ञान में आनंद है, because they can't feel anything. क्योंकि अज्ञान में आप कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं।
Am I answering the questions? क्या प्रश्न का उत्तर Is this दूंगा? our philosophy? क्या ये हमारा Am I सिद्धांत है? saying right there? क्या मैं सही बातें कह रहा हूँ? Believe me, I learned the hard way also. तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने भी कठिन तरीके से जीवन में It says you can learn by hearing and you can learn by a heavy stick. दो तरीके होते हैं, या तो आप डंडे से सीख सकते हैं या सुनकर And सीख in सकते Kali Yuga, mostly it's a heavy stick हैं। कलियुग में ज़्यादातर जो है भारी डंडे से ही सीखते हैं, because we are very stubborn क्योंकि हम बहुत जिद्दी लोग हैं and we are very attached to our ideas. और हम अपने खुद के विचारों पर केंद्रित And our रहना चाहते हैं, plans. खुद की योजनाओं के प्रति, And this is the problem. और यही समस्या है। We're not trying to find out what is Krishna's plan. हम ये पता लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कृष्ण की क्या We're योजना just है। all day, what is our plan? हम पूरे दिन ये सोच रहे हैं मेरी क्या योजना है, We need a plan. हमें एक योजना चाहिए। And we're just constantly speculating until you have some kind of plan that's like, okay, that seems like it's a good plan. और हम निरंतर अपने मनोरंजन में लगे रहते हैं, कौन सी योजना है, अंत में हमें एक योजना मिलती है मन से, Okay, that sounds like the best plan. ऐसा लग रहा है कि ये योजना And then you start going in that way, and like nothing is lining up, nothing cooperating with your plan. जब हम अपनी योजना में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ भी सामने नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा हमारी The योजना। whole world didn't get the message. विश्व को We got the खबर नहीं message, मिली but nobody got the हमारी message. योजना, हमें खबर है हमारी योजना की, बाकी Nobody's लोग नहीं मिले, cooperating with us. हमारे योजना में कोई सहयोग नहीं कर रहा। So this is a problem ये for our plan. हमारी योजना में, Doesn't our plan mean that everyone has to play their part in our plan? हमारी योजना का मतलब है कि हमारी योजना में सभी लोग अपना अपना कुछ भाग निभाएं। But everyone's saying, well, you're supposed to play the part in my plan. लेकिन बाकी लोग ये कह रहे हैं कि आप मेरी योजना में अपना भाग निभाइए, And we all have different plans. और सभी की अलग अलग योजना है। So how's that going to work out? तो कैसे ये साथ काम कर पाएगा? Frustrated. I'm just frustrated. और पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। Material life means frustrated. तो भौतिक जीवन का मतलब ही है हताश होना, Nothing's working. कुछ भी काम नहीं कर रहा, Great plan. बहुत ही अच्छी No योजना one's है, cooperating. लेकिन कोई सहयोग नहीं कर They're sabotaging me. रहा, ये मुझे मान रहा है, They hate me. मुझे नफरत They're है, envious of me. मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष करते हैं, They're not cooperating with me. मेरा सहयोग नहीं कर रहे। Does it sound right? सुनने में सही Can you है? identify with any of this information? क्या इनमें से कोई भी जानकारी आपको परिचित लग रही है? What else are we talking about? और क्या हम बात कर सकते हैं? I didn't know what we were talking about. I I always have something, but sometimes I just feel like we're supposed to talk about something else. मैं हमेशा कुछ तैयार करके आता हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि हमें किसी और चीज़ की बात करनी We चाहिए। can make a plan हम योजना बनाते हैं to try to think that, okay, this will be pleasing to Guru and Krishna. This is according to my instructions. कि मुझे ये निर्देश मिला है और मैं इस निर्देश को पालन करने जा रहा हूँ गुरु और कृष्ण को खुश करने के लिए। But the final factor of action is Krishna. लेकिन हर एक कार्य का अंतिम कारक कृष्ण है। So he'll say one way or another. वो बताएंगे एक तरीके से या दूसरे तरीके And से। we have to be adjustable. और हमें अपनी योजना के हिसाब से अपने आप And को we are not adjustable. और हम उनकी योजना के हिसाब से ढलते नहीं। We get this thing like cemented together in our minds, right? हमने अपने मन में अपनी योजना को सीमेंट से जोड़ कर रखा है। And as long as everything goes like this, we're going to be fine. हम सोचते हैं जब तक हमारी इस योजना के साथ सब कुछ चलेगा तब And तक then सब कुछ Christian ठीक है। just walks by and just like, just like knocks the thing down, you know? It's just like, he's, oh, oops. कृष्ण हमारी योजना में घुसते हैं और टक्का मार के चीजों को गिरा देते हैं को थोड़ा क्षमा कीजिए। So that's what it is. We're just building and then Krishna just started. जैसे ही हम बना रहे हैं तुरंत कृष्ण ने इसको तोड़ दिया। It's like your kids, you know, the kids, they make like this, you know, this with the blocks, you know? And then the little sister or brother comes and just crashes it all down, you know? ऐसे बच्चे खेल रहे होते हैं और ईंटों को इकट्ठा करके ऊंचा कर रहे होते हैं तो कोई और फिर दोनों लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। And how many times you're going to build it? Then you're getting in a fight or you're getting frustrated, you cannot build it, you cannot keep it, it will not stay. Right? कितनी बार वो आइडिया खड़े करते रहेंगे या तो कोई आके उसको गिरा देता है या खुद ऊपर गिर जाता है या फिर से हताश हो जाते हैं मतलब कभी को बन रहा है And then just, okay, forget it. मैं अब नहीं बनाऊंगा
Then it's like, all right, Krishna, what's your plan? And then we finally ask him, Krishna, okay, what's your plan? I'll try to do it, even though I don't want to do it. And then all of a sudden we're like pure devotees. अंत में हम कहते हैं कि ठीक है कृष्णा की क्या योजना है, मैं इसको पालन करने के लिए तैयार हूँ, यद्यपि मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमें करना We're like cornered. There's nothing else you can do except surrender. So we finally surrender, and then we're like, we're pure devotees. जब हम कुछ नहीं काम आता हम बिल्कुल कोने में आ जाते हैं, तब हम जाके कृष्ण को शरणागत करते हैं और फिर हम अचानक से कहते हैं कि हम शुद्ध भक्त हैं। Does that sound about right? और क्या ये सुनने में थोड़ा परिचित लग रहा है? So we're going kicking and screaming, तो हम अपने हाथ पैर मार रहे हैं, moaning and groaning. शोक कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा है, We're not loving it. हम इसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, We're accepting it हम स्वीकार कर रहे हैं, because everything else doesn't work. हमें कुछ चीजें काम नहीं आ रही या काम नहीं It's not exactly the highest level of pure loving devotional service, ये शुद्ध प्रेम में भक्ति का सर्वोत्तम स्तर तो अवश्य नहीं है, but it does mean we're getting smarter. लेकिन इसका ये मतलब है कि हम थोड़े बुद्धिमान हो गए, Like Durvasa Muni, ऐसे दुर्वासा मुनि हो गए थे, right? When the chakra is chasing you down, तो जब चक्र आपको पीछे दौड़ा रहा हो, right? It says when the chakra, he was going everywhere with that chakra chasing him. तो जहाँ भी जा रहे थे कहते हैं चक्र आपके पीछे पीछे भाग रहा था, He went to all the demigods, he even went to Vishnu, he even went to spiritual world. He said, can you do something about this chakra, you know? तो वो सारे देवी देवता के पास गए, यहाँ तक कि विष्णु के पास भी गए, उन्होंने पूछा कि क्या आप इस चक्र से मुझे छुटकारा दिला सकते हैं? And then it says, as he was going with the chakra burning him, he was becoming a very humble and very intelligent. चक्र उनके पीछे घूम रहा था, जैसे वो भाग रहे थे, धीरे-धीरे वो थोड़ा विनम्र हो रहे थे और थोड़ा उनकी बुद्धि बढ़ And so the more humble we are, right, the less intoxicated we are, then the more intelligent, conscious we'll be, right? तो हम जितना ज़्यादा विनम्र रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारा नशा कम होगा, उतना ज़्यादा हमारे अंदर बुद्धि रहेगी। Then we're going to look for a better plan. तब हम बेहतर योजना के पीछे जा सकते हैं। How's your plans working out? Manage? आपकी योजना कैसी काम आ रही है? Madhav, you get a plan? माधव आपके पास कोई योजना है? Krishna. Any other points on any of this? कोई अन्य बात या कोई इन विषयों के ऊपर किसी के पास? I always have sinful desires. What? I always have sinful desires. And whenever I try to... You know what's funny is usually I was preaching in Orissa and Bengali, and you're from the west side, right? Yeah. So what happens is they speak much higher tone, And faster. right? They speak Higher pitch. like high pitch, more high pitch. Yeah. So I'm not used to that. Frequent. And then you're talking really fast, and I'm deaf, I'm old man. So please excuse me. तो ज़्यादातर समय मैंने ओडिशा और बंगाल में प्रचार करता हूँ, तो वहाँ पर लोग इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, और ये जिस तरफ से पश्चिमी तरफ से वहाँ लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और ऊपर से ये बहुत तेजी से बात करते हैं। I know you're excited to see me. You're excited to see me tonight. और आज रात मुझे देख के बहुत तेजी में So I always have sinful desires. you And always are filled with desires? sinful desires, not Oh, desires. sinful desires. Very sinful Do you have desires. any spiritual desires? Very less in quantity. Very little bit, yeah. And they are not in quality also. And you're realizing that? A lot of them now. That's self-realization. You're being honest and you're being self-realized because you're scientifically realizing the reality of the condition of your soul. That's self-realization. गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, यानी कि आपने आत्म साक्षात्कार किया है, आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझ पा रहे हैं आपके अंदर कितनी सारी पाप की इच्छाएं हैं और लेकिन आध्यात्मिक इच्छा बहुत कम है। Now, do you like that result? लेकिन क्या आपको ये पसंद है? Do you like that lifestyle? क्या आपको इस तरह का जीवन Of पसंद है? uncontrolled mind and senses? अनियंत्रित मन और इंद्रियों And just getting heavy punishments and reactions and complete anxiety? Do you like that lifestyle? और इस तरह से भारी आपको मार झेलनी पड़ रही है और चिंता और परेशानी है जीवन It में, means we have to do something about तो it. उसका Right? समाधान करने के लिए हमें कुछ करना We होगा, have to change the lifestyle, हमें जीवन शैली को परिवर्तित करना होगा, change the consciousness. चेतना को परिवर्तन करना होगा। So you have Himalayan mountain problem.
आपके पास हिमालय पर्वत की समस्या है, right? It says like some dust on the mirror. कहते हैं जैसे दर्पण में कोई धूल है, My guru used to laugh, dust? Dust? This is thick layer like a Himalayan mountain. ये मोटी परत हिमालय पर्वत जैसी है। And when we first joined, it's like, okay, there's some dust on the mirror, and just chant, and then the dust will come off, right? And then you're like chanting, it's like, what kind of dust is this? It's a little coming off, but then like 10 times more is coming on there, you know? जब आप शुरुआत में आपको कहा गया कि आप जब कीजिए नाम लीजिए जिंदगी ये जो साफ हो जाएगी, लेकिन हम सालों जब कर रहे हैं ये रोज आप नहीं ज़्यादा होगी जाएगी। It was always confusing. Brothers said, just come, chant, dance, take a shot, go back to God. The little dust in the mirror, chant, get rid of it like a feather duster, get rid of the dust, right? And then you're not good. इस बात ने कहा है आप ये नाम जप कीजिए और जैसे दर्पण से थोड़ा धूल हटानी होती है, ये धूल हटानी है आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, लगा ये इतना सा। But you're coming from Goloka Vrindavan anyway, so it shouldn't be that bad. बस आप जो गोलोक वृंदावन से आए हैं उसके लिए इतना नहीं है। We're assuming a lot, aren't we? हमको ज़्यादा ही अपने आप को Because we don't know the tattva, we don't know the science. क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं है, हमें ये विज्ञान नहीं पता। That's why we're coming with so much misunderstanding and misconception. इसीलिए हमें इतनी सारी गलतफहमी और गलत समझी हमारे There's nobody explaining it to us in a reasonable way, which makes sense, and it's according to Guru Sadhu Shastra. कि कोई हमारे सामने इस तरीके से इनको प्रस्तुत करे, इसका कोई अर्थ बने गुरु साधु शास्त्र के आधार। And then when you hear the actual presentation from Prabhupada's books and teachings, it's like, oh, that makes sense. I accept that. Now that makes sense. जब आप असल में श्री प्रभुपाद की प्रस्तुति गुरु साधु शास्त्र के आधार पर सुनेंगे तब आपको लगेगा ये बिल्कुल सही बातें बता रही हैं। So bona fide guru can take the information and explain it in such a way that it will make sense to you. It will be practical for you. तो हमारे गुरु ऐसी चीजों को बाहर निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपको लगेगा इन सारी बातों का बिल्कुल सही है। Otherwise, it's just some philosophy floating up in the air. It's like, how do you use that? अगर ऐसा लगेगा ये सब कुछ दार्शनिक बातें हैं जो बस हवा में उड़ रही हैं, हमारे जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं है। There's so many instructions there. What instructions are meant for us? बहुत सारे निर्देश भरे पड़े हैं, जैसे कौन सा निर्देश हमारे लिए कार्य करेगा? And then Prabhupada seemingly is giving opposite instructions. और कई बार देखने में जैसा लगता है प्रभुपाद कई बार बिल्कुल विपरीत निर्देश दे रहे हैं। So how do you reconcile all of that? तो ये सारी चीजों को आप एक जगह एकत्र कैसे करते हैं? That means every single point needs some kind of reconciliation. Because it's all perfect in its own way. Right? हर एक जो विषय है वो सभी अपने आप में पूर्ण है, तो उसको सही तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है। How do you understand it if it appears to be apparently conflicting information, opposite information? लेकिन ऐसे लोग समझ पाएंगे कि कई बार बाहरी वो एक दूसरे के बीच मतभेद लगते हैं कुछ दो विषय। So it needs further explanation. और आगे उसमें विवरण विश्लेषण। I mean, if we just satisfy like, okay, it's all inconceivable, and why even try? Well, then nothing is practical then. अगर हम इस बात से संतुष्ट हैं, ये सब जो बहुत विद्या बातें हैं, तो फिर हमारे लिए तो फिर उसमें से कुछ भी व्यवहारिक नहीं है जीवन। Then we'll all just be, we'll be in hyper states of mental speculation. इसका मतलब हमेशा हम अपने मनोधर्म में सबसे घुसे रहेंगे। Because now we've introduced fourth-dimensional theoretical thinking, right? चतुर्थ आयाम का लेकिन मौखिक जो विवरण है विश्लेषण। I didn't even think about that before. ये सब चीजें हमने पहले कभी सोची नहीं। I remember when I first came to the temple, devotees were asking questions like, my God, I don't even understand the guy's question. What does he think about the answer? मैं जब शुरुआत में मैंने देखा कुछ भक्त ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे ये सवाल तक मैंने सोचा कभी नहीं था। उसका उत्तर कितना कैसा होगा? One kind of crazy guy from Czech Republic who's like an engineer and scientist, and he's asking this question. I'm like, that's an unbelievable question. एक व्यक्ति था चेक रिपब्लिक का, वो इंजीनियर था और वैज्ञानिक था, वो ऐसे सवाल पूछता My था। brain alone would never have even been able to even ask the question. But just think of what is the answer. मेरा दिमाग तो कभी सोच भी नहीं सकता था जो उसने ऐसा सवाल पूछा कि उसका उत्तर कैसा होगा। And this is three-dimensional. और वो ऐसा सवाल जो कि भौतिक प्रश्न होता था, 3 आयामों वाला।
So we need to try to understand very complex and transcendental subject matters in a simple way, which makes sense to the point that it becomes practical, that you can practically use it in your day-to-day life and consciousness. तो ये चतुर्थ आयाम वाले विषय इस सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए कि इस सारी बातों का बिल्कुल सही अर्थ बने और हम अपने जीवन में व्यवहारिक तरीके से इन सारी चीजों को लगा सके जो हमारे जीवन में चेतना में परिवर्तन ला सके. Doesn't it make sense? And Krishna knows what we need to hear. कृष्ण को पता है हमें क्या चीजें सुननी चाहिए. Just like an expert teacher, all the people in the class are on different levels, different platforms. जैसे जो एक निपुण शिक्षक होते हैं उनको पता होता है अलग-अलग क्लास के बच्चे अलग-अलग स्तर पे होते हैं. And they're very expert at giving everybody exactly what they need to hear. और बहुत दक्ष होते हैं सभी लोगों को उसी तरीके से चीजें देने की जो उनको जरूरत है सुनने की. Source of all knowledge and intelligence, he knows exactly what we need to hear. कृष्ण सारे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से पता है हमें क्या सुनने की जरूरत है. And the most amazing thing is Krishna speaks to Srimad Bhagavatam and everybody hears what they need to hear out of that one statement. और सबसे अद्भुत बात ये है कि कृष्ण श्रीमद् भागवतम बोलते हैं सिर्फ एक लाइन में सभी लोगों को वो चीज मिल जाती है जो उनको सुनने की जरूरत है. So you take it like this, you're taking it like that, he's taking it like that, she's taking it like that. It's the same statement. एक ही बात है लेकिन किसी ने उसको एक तरीके से करना है दूसरे ने दूसरे तरीके से तीसरे ने तीसरे तरीके से. So not one word of a sentence that's spoken is not meant for your soul. Every letter, every word, every sentence of the Bhagavatam is meant for every single soul. Now, how do you understand that and grasp that and assimilate that? That's the question. तो श्रीमद् भागवतम का हर एक अक्षर, हर एक शब्द, हर एक वाक्य, हर कुछ, हर एक जीवात्मा के लिए है. लेकिन अब प्रश्न ये है कैसे आप उसको समझेंगे, कैसे आप उसको जीवन में ग्रहण करेंगे और कैसे उसको एकत्र करेंगे. Otherwise, we're saying like, oh, that's meant for her, oh, that was meant for him, yeah, that's his problem. Right? We're like redirecting. We're like an operator, like connecting, different, people who want to talk. Oh yeah, okay, yeah, that instruction is meant for him, yeah, that instruction is meant for her, right? Oh, it's meant for you, it's meant for us. वरना इस तरह के ऑपरेटर के जैसे कोई निर्देश हमारे सामने आ रहा है हम कहेंगे ओ ये निर्देश उसके लिए था या ये उसके लिए सही होगा. ऐसा करके हम जो है सारी अलग-अलग निर्देशन दे रहे हैं सारे बातों को. So that should be the internal practice of our spiritual life, is how does every word and sentence and philosophical spiritual point, how is that meant for us? How can we understand and use that for our own spiritual benefit? हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे वो हर एक शब्द को हम हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हमारे जीवन में सही अर्थ बनता है. Let Guru and Krishna worry about other people. बाकी लोगों की चिंता गुरु और कृष्ण That's their lookout. ये उनको देखना है. We should just do what is our work. बस केवल वही करना है जो हमारा Spiritual कार्य life है. is internal. और भक्ति जीवन भी. So this is like Krishna giving you like a perfect, like a tutoring. जैसे कृष्ण आपको बहुत ही सही ट्यूशन दे रहे हैं. So every time Krishna is speaking in Bhagavatam, Bhagavad Gita, it's Krishna personally tutoring your soul. There's no one else in the class. जितनी बार भी आप भागवतम में आते हैं तो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से कृष्ण सीधे सीधे आपको ट्यूशन दे रहे हैं और कोई किसी को नहीं. I remember when my Guru was speaking, I felt that every word, every sentence was meant for me. I don't know what other people were hearing. जब मैं मेरे गुरुदेव से श्रवण करता होता था तो हर एक शब्द जो कह रहे हैं हर एक शब्द वो मेरे लिए होता था. मुझे नहीं पता था कि लोग क्या सोच रहे हैं. Taking that. I don't know. किस कौन सा लोग किस तरीके से स्वीकार कर रहे I हैं. know how I'm taking that. लेकिन मुझे ये समझ में आता है मैं कैसे उसको ले रहा हूँ. And I would walk out of that class like Gurudev gave that whole class just to me. और मैं जब क्लास से बाहर आता था मुझे ऐसा लगता था गुरुदेव ने पूरा क्लास केवल मुझे दिया. And it's true. और ये बिल्कुल सत्य भी था. But he's giving the same class to you as well. लेकिन उन्हें वो बिल्कुल वही क्लास आपको भी दे रहे हैं. But are you realizing that? क्या आप उसको साक्षात्कार कर रहे हैं? That's the question. ये प्रश्न है. Sometimes we say, oh, Gurudev, he spoke that whole class to me.
कभी आपको ऐसा लगेगा गुरुदेव ने पूरा क्लास मुझे दिया Then my godbrother said, what are you talking about? Gurudev was talking, that whole class was meant for me. और मेरे गुरु भाई कहते थे तुम क्या बोल रहे हो गुरुदेव ने पूरा क्लास मुझे दिया And other devotee said, you guys don't know what you're talking about. Gurudev was looking at me and that whole class was meant for me. और तीसरा बंदा कहता था तुम दोनों को पता नहीं क्या बातें कर रहे हो गुरुदेव पूरे समय मुझे देख रहे थे मुझे प्रचार करेंगे So once we understand that by mercy of Guru Krishna, mercy of Srimad Bhagavatam, we should never walk out of any class or association with some question or doubt unresolved or unanswered. We'd be a fool if we just allow that to happen. It should be like this. इसी तरह से अगर हमें यह अनुभव प्राप्त होता है गुरु और कृष्ण की कृपा से तो कोई भी एक क्लास हमें संदेहों के साथ प्रश्नों के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए हम बेवकूफ होंगे अगर हमारे अंदर संदेह और प्रश्न रह जाते हैं If you know Krishna, Guru Krishna want to answer your question, they're prepared to answer your question. अगर आपको पता है गुरु कृष्ण आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं और उनको प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार And हैं they want to solve your problem and destroy your doubts for you. वो आपके सवालों को पूरी तरह से उत्तर देना चाहते हैं आपके And संदेहों को then you नष्ट don't करना ask चाहते हैं them, लेकिन आप पूछ and नहीं you रहे don't want to hear और them, ना आप उनको सुनना चाहते हैं and you don't think I can live with my demons, अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने असुरों के साथ में रह सकता my हूँ demons of doubt, this is just the way my life goes, ये मेरे असुरों संदेहों के साथ में रह सकता हूँ मेरा जीवन ऐसा ही चलता है then we're a fool. हम मूर्ख We हैं deserve to suffer. हम दुख भोगने के लायक हैं So it's, this is meant for intelligent, wise people. तो कहा जाता है ये बुद्धिमान चतुर लोगों के लिए है That's why many times Prabhupada was speaking, he said, please try to be intelligent. Use your God-given intelligence. Try to understand how valuable this information is for you. ऐसे कृष्ण भगवान ने कई बार कहा है भगवान ने जो आपको शायद बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए सारी जानकारी आप लोगों के लिए दी जा रही है Become fortunate. Take advantage of the offer, the opportunity. मौके का लाभ उठाइए और जो आपके सामने प्रस्ताव है Solve all the कीजिए अपने सारे समस्याओं को समाधान कीजिए misconceptions, सारे गलतफहमी को खत्म कीजिए all of this misunderstanding. सारी गलतफहमियां Why should you live with it? क्यों आप इसके साथ में रहना And चाहते there'll be no peace, कोई शांति नहीं nothing is resolved, कुछ nothing भी is समाधान clear, कुछ भी साफ नहीं nothing makes sense. कुछ भी चीजों का मतलब नहीं बनना It's all hit or miss. या तो लगेगा या नहीं लगेगा And we cannot get free from speculation. और हम मनोरंजन से मुक्ति नहीं पा पा रहे And that means mind always on, always disturbed, always just giving so much disturbing information. यानी कि मन हमेशा चालू रहता है हमेशा कुछ न कुछ परेशान करने वाली जानकारी बस देता रहता है Because Rishikesh, Krishna, master of mind and senses, is not purifying, controlling mind and senses for us. क्योंकि ऋषिकेश जो मन और इंद्रिय के स्वामी हैं हमारे मन और इंद्रिय को शुद्ध और नियंत्रण नहीं कर रहे हैं Because we're not agreeing. क्योंकि हम उनके साथ सहमत नहीं हो रहे हैं हम उनका सहयोग नहीं कर We're रहे not surrendering. हम शरणागत नहीं हैं All day long we're saying we got so many problems. The only problem is we're not surrendering to Krishna. पूरे दिन हम ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत सी समस्या है समस्या सिर्फ एक है कृष्ण को शरणागत करना We surrender to Krishna by Krishna's mercy. We don't have a problem. अगर हम कृष्ण की कृपा से कृष्ण को शरणागत कर पाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं That's why it says only pure devotees, only they can be peaceful, only they can be happy. इसलिए कहते हैं केवल शुद्ध भक्त ही शांत और सुखी रह सकते Krishna is a reservoir of all pleasure. कृष्ण सारे आनंद के स्रोत There's a Rama. Rama means reservoir of all pleasure. वो राम है राम का मतलब है सारे आनंद के भंडार So we have the reservoir of all pleasure ready to share that pleasure with us, right next to us, and we're ignoring it. तो ये सारे आनंद के भंडार जो हमारे बिल्कुल नजदीक है और हमसे वो आनंद बांटना चाहते हैं लेकिन हम उनको पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं Why? ऐसा क्यों Because we're looking for pleasure क्योंकि हम आनंद ढूंढ रहे हैं external. बाहर तरीके से That's the root of the problem. ये समस्या की जड़ है So we have a surrendering problem. तो हमारी शरणागति की समस्या है We're surrendering, हम शरणागत कर रहे हैं but to uncontrolled mind and senses, लेकिन अनियंत्रित मन और इंद्रिय to the demands and the concoctions of Maya, मन के मांगों को और उनके and to the agents of Maya. और माया के We're serving in Maya's family instead of Krishna's family. तो हम माया के परिवार की सेवा कर रहे हैं कृष्ण के परिवार की सेवा करने की That's the root of the problem. ये सारी समस्या की जड़ है
And rather than trying to purify that and get free from that, we're just, we're digging in deeper. तो उसको शुद्ध करने की बजाय, उससे मुक्ति पाने की बजाय हम उसी में और गहराई से घुसते Acting हैं। like a worms in the stool. जैसे विष्ठा के अंदर जो कीड़ा घुसा रहता है उसकी तरह। Make sense? मेरी बात समझ में आई? Napa. Do you understand English? क्या आप अंग्रेजी You समझते हैं? understand me? आप समझते हैं मेरी बात? ठीक है। What else are we supposed to know? क्या हमें शादी की जरूरत है? Yeah. Do you guys like this conversation? आपको ये चर्चा पसंद आ रही है? Is it helpful? Oh, he was supposed to ask a question. वो ये एक सवाल पूछने वाले थे। I got lost in the Himalayan mountains. मैं हिमालय पर्वत पर खो गया। But I think you got all your answers, right? But do you feel you want to ask the question anyway? ओके, आप किसी को कोई सवाल पूछना चाहते हैं? I'm satisfied, but if I Okay, give the microphone. You said you're satisfied. Yes. Oh, wait a second. You said bye. You said bye. What's the bye? maybe if I complete the question, I'll get more understanding properly. You want more understanding? Yeah, because Okay, then give her the mic. You'll have something Hare Krishna, Srila Gurudev. Yeah, take my arm, man. You want to cut the arm off. He needs more. Right? While we are serving in Guru Krishna family, what is our mood and mentality, and how can we become a humble You're serving servant? in Guru Krishna's family, right? तो माता जी पूछ रही है So what is your mood and mentality? गुरु कृष्ण की सेवा में हमारी मानसिकता भाव कैसा होना चाहिए? आपकी मानसिकता भाव कैसी है? You're saying if we're serving in Guru Krishna's family, what is our mood and what was the other one? Mentality. And mentality, right? So are you serving in Guru Krishna's family? Then what is your mood and your mentality? गुरु और कृष्ण के संसार में आप सेवा कर रही हैं, आपकी भाव और मानसिकता कैसी है? Enlighten us. हमें जाके क्या करें? Because you're happy, so you're getting some mercy. आप खुश दिख रहे हैं, इसमें अवस्था को कुछ प्रॉब्लम है। Either that or you're really crazy. I don't know. Maybe both. Is your mother here? Not yet. She will come after 4 Oh, days. thank God. Because I didn't want her mother to hear all of that. आपकी माँ यहाँ नहीं है, मुझे अच्छा हुआ आपकी माँ को मैं नहीं चाहता ये सब बातें सुनना। Calling her, the mother, daughter crazy, बेटी को पागल बोल रहे हैं। The mother be like, then why are you sending her here? माँ कहेगी फिर क्यों हमको यहाँ भेजा है? Because we don't want her to be crazy. क्योंकि हम उनको पागल नहीं रखना चाहते। We want her to be happy, peaceful, and happy. हम चाहते हैं वो सुखी और शांत रहे। All right? ठीक है? So, what is your mood and mentality? आपकी भाव और मानसिकता कैसी Are है? you liking your experience? क्या आपको आपका अनुभव पसंद आ रहा है? I feel like when I just pray to Krishna sincerely, so that I can serve Guru Krishna, and I like praying sincerely, then I got some mercy. But somehow I feel like I have lots of demonic qualities, which is a stumbling block. So you need more mercy to get rid of those demonic qualities. Yes. जब मैं कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ, मैं गुरु कृष्ण को सही तरीके से सेवा कर सकूँ, लेकिन फिर मैं ये भी देखती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे आश्रित गुण हैं। मुझे बता रहे हैं यानी कि आपको और ज़्यादा कृपा की जरूरत है ताकि आप उन गुणों से भी मुक्ति पा सकें। It's like if you're sick, or you're not feeling well, you start taking vitamins, then you're like, wow, I'm feeling more healthy, right? जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं और आप धीरे विटामिन लेना शुरू करते हैं, तो आप धीरे-धीरे थोड़ा स्वस्थ अपने आप को महसूस करना शुरू करते हैं। And then you catch a cold or you get sick, and you're like, okay, now I need even more medicine, right? और फिर जब अचानक से आपको पता चलता है या फिर जब बीमार हो गए तब आप में और ज़्यादा दवाई लेने की जरूरत है। So yes, you know, okay, it's working, but I'm also realizing that
It's like Himalayan mountains. So now we need a real heavy-duty medicine. एक बार कि ये कुछ काम कर रहा है, लेकिन अभी बीमारी और भी बड़ी हिमालय पर्वत जैसी नहीं और भारी भरकम दवा लेने की जरूरत है। So then if you're eager, greedy for that medicine, अगर आप बहुत उत्सुक हैं और लोभी हैं उस दवा को पाने के लिए, then by mercy of Guru and Krishna, then you'll get what's required to help you. तो गुरु और कृष्ण की कृपा से आपको वो चीज मिलेगी जो आपकी मदद करेगी और आपको उससे But also, we have to be patient. लेकिन हमें थोड़ा धैर्य Srila Guru Swami says you should be very enthusiastic. श्रील गुरु गोस्वामी ने कहा आपको बहुत उत्साही होना चाहिए, And you should be confident. आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, This will work. ये काम करेगा, Otherwise, how can you be enthusiastic? वरना आपके अंदर उत्साह कहाँ से आएगा? So if you're confident it will work and you're enthusiastic, these are very nice qualities. अगर आपको पूरा आत्मविश्वास है और आपको पूरा उत्साह है कि अवश्य ये Prabhupada said if you follow everything nicely and hearing and chanting, then you'll be confident, you'll be enthusiastic. बताते हैं अगर आप अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, चीजों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपके अंदर उत्साह आत्मविश्वास But then Srila Guru Swami also says, but you have to be patient. लेकिन श्री गुरु गोस्वामी ने ये भी कहा है आपको थोड़ा धैर्य भी रखना I चाहिए। always think it's taken us a long time to get in trouble. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें बहुत समय लगा इस मुसीबत में This फंसने is में। not some quick thing. This is a long-standing problem we've created. तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। So it's going to take time to go through it. तो थोड़ा समय लगेगा इसमें से गुजरने के लिए। You get a good doctor, you get good medicine, good hospital, good association, and all support system is there. That's all very nice. अस्पताल है, आसपास अच्छे लोगों का संग है, तो सारी अच्छी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध And it's हैं required. और ये जरूरी है। But we have to have a reasonable expectation. लेकिन हमें एक व्यावहारिक अपेक्षा, We should not have an unreasonable expectation. गैर जरूरी अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए। We've been doing this since time immemorial. हमने असीमित काल से हम ये सब Cycles of birth and death, 8,400,000 species so far. तो 84 लाख योनि में हम कई बार घूमते हुए हैं। So now somehow we came to human form of life. तो इस तरह से इस बार हम मनुष्य के शरीर में आए It's हैं। rarely achieved birth. तो ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है। Now here is the body which can help us. How do you purify and elevate consciousness? तो यहाँ एक शरीर आपके पास है जो आपको मदद करेगा कैसे आप अपनी चेतना को उन्नत बना सकते हैं और शुद्ध बना सकते हैं। So we have to be also patient. तो हमें धैर्य भी रखना होगा। The problem is because we have so much pride in falsico and so much sentimentality, we think we're already advanced. We're thinking we're already pure, we're already nice devotee, we're already fully surrendered. We're already thinking that a lot of the work has already been done. समस्या ये है कि हमारा अनुभव इतिहास में ये सोचने को मजबूर करता है कि बहुत ही उन्नत शुद्ध भक्त है, बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली है। So that may not be true. लेकिन जरूरी नहीं हो सकती। It says, my Guru said that if you're being honest, now your spiritual life is started. अगर आप ईमानदार हैं तो आपके आध्यात्मिक जीवन शुरू हो सकता है। Before that, we're just living, in the illusions of grandeur. और उसके पहले हम केवल मोह के जाल में फंस गए। That's why when I met my Gurudev, he said, you're deaf, dumb, and blind. I'm like, how are we deaf, dumb, and blind? जैसे मैंने गुरुदेव से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि आप आध्यात्मिक रूप से अंधे मुझे बहरे हैं, तो मैंने पूछा That means कि कैसे? we think we're somebody. We did something. इसका मतलब हम सोचते हैं हमने कुछ किया है, हमने कुछ प्राप्त किया We है। know so many things. बहुत सारी चीजें जानते हैं। So in the beginning, it's a little difficult to comprehend that point. तो शुरुआत में ये बात समझ पाने में मुझे काफी मुश्किल हुई। That's why Prabhupada says, actually Krishna conscious. बात के बाद कहते हैं कि असल कृष्ण भाव, Factually, realized. तत्व में साक्षात्कार, And actuality, असल में like this. इस तरीके से। So there's a difference between theoretical and practical realization. तो एक अंतर है केवल मौखिक स्तर में और व्यवहारिक जीवन में। So that first we have to wake up, तो पहले तो हमें जानना होगा understand what is the reality of our condition and position. और समझना होगा हमारी स्थिति की सच्चाई क्या है। And if we have a lot of pride and arrogance, falsico, we're not the best judge of our own
position or condition. अगर हमारे पास मिथ्या अहंकार के नाम पर है तो इसका मतलब हम अपने स्वयं की स्थिति की सच्चाई को सही तरीके से नहीं Because we have too high impression of ourselves. क्योंकि हम खुद को कुछ ज्यादा नहीं सोचते हैं We're conceited, puffed up. क्योंकि हमारे अंदर दर्प है हमारे अंदर दम है That's why we need a guru तो इसीलिए हमें एक गुरु की जरूरत to है help us to understand what is our actual platform. जो हमारी मदद करेंगे देख पाने के लिए असल में हमारी क्या What is चीज़ है our actual adhika or qualification or disqualification? हमारा असल अधिकार योग्यता या क्या अयोग्यता है And that's very humbling और ये बहुत विनम्र बनाएगा because it's much different than what we're thinking. क्योंकि ये बहुत ही अलग होगा जो हम सोचते हैं जो असल में है I remember after many years, and I told Gurudev, and he said, well, you know, I was saying, yeah, I did all of these things, you know. And then Gurudev said, oh, no loss. तो कई सालों के बाद जब मैं गुरुदेव को मैंने बताया मुझे कहा कि मैंने ये सारी कुछ अपने जीवन में किया तो गुरुदेव ने उत्तर दिया लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ इससे And all chanting, sadhana, service, everything, right? And Gurudev said, well, no loss. इतना जप किया मैंने इतना साधना किया इतना सब कुछ किया गुरुदेव ने ठीक है वो कुछ नुकसान नहीं हुआ उससे But doesn't that also mean, well, not much gain? लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि मतलब कुछ असल में हुआ नहीं No loss. वो कह रहे कुछ नुकसान नहीं हुआ उससे You know, I'm assigning a value to that. मैं तो सोच रहा था कि वो बहुत मूल्यवान चीज मैंने की Right? According to my estimation, तो मेरे you're assigning a हिसाब से certain value to what you think you've done. आप अपने जो कुछ किया उसको आप एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं And then when the results don't match your valuing of your, you know, your offering, there's going to be a disconnect. और लेकिन जब आपको फल नहीं मिल रहा है लेकिन जितना आपने बोल दे दिया अर्थ दिया अपने कार्यों को और दोनों जब मेल नहीं खा Srila Bhaktivinoda Thakur, he explains like this. He said that you have a faulty expectation. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं इस तरीके से आप जो गलत अपेक्षा लगा के बैठे हैं Based on not understanding your actual adhikar or position. तो अपने असल अधिकार या योग्यता को ना समझकर So if we overestimate and we're assuming so much, then we're also thinking that Krishna says, as you surrender, I reward you. तो अगर हम जरूरत से ज्यादा आकलन कर रहे हैं और हमें उस तरह का परिणाम नहीं मिल रहा Proportionally. तो कृष्ण ने बताया है कि वो हमें वैसा ही So if we're putting a value number on our, you know, our surrender and service, then that means we're also having a certain expectation of what our reward should be. अगर हमने जो कुछ किया What we think we deserve. जो कुछ हम शरणागत कर रहे हैं उसको हम मान रहे हैं बहुत ज्यादा किया है उसको बहुत ज्यादा हम मोल दे रहे हैं And then ऐसा परिणाम नहीं मिल if we're not getting that result, naturally you're going to have a doubt. Like, how is it like this? हम उसका फल नहीं मिल रहा तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर कुछ संदेह उत्पन्न होंगे Then we made Bhaktivinoda Thakur said, then you can become discouraged, you can become disappointed, तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं तो आप जो है निरुत्साहित हो जाएंगे and you can lose faith और आप थोड़ी because you're thinking it doesn't work based on what I think I'm doing and surrendering and effort and all of this. Then these results not matching. फिर आप कहेंगे कि ये काम नहीं करता क्योंकि आपने सोचा कि जितना मैंने शरणागत किया जो कुछ मैंने किया जितना आपने उसको मोल दिया लेकिन उसका परिणाम नहीं So मिला you can see how that's a very bewildering. तो फिर आप देख पाएंगे कि कितना भ्रमित करने वाला परिस्थिति For the last couple of years, you know, in Bhubaneswar, last year, Srila Govinda Swami was really stressing on understanding what is your adhikar, what is your actual qualification. श्री गवर्नमेंट जमाना ने अपने आखिरी समय में जितने मैंने प्रवचन दिए भुवनेश्वर उन्होंने केवल असल अधिकार के बारे में जानने के लिए प्रवचन दिए And that has to be objectively analyzed from the outside through Guru Sadhu Shastra. और उसको पूरी तरह से एक बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए बाहरी तरीके से गुरु साधु और शास्त्र के Not subjectively measured based on or through the lenses of false ego, pride, arrogance, conceited nature. तो हमारे दम्भ मिथ्या अहंकार और दर्प इस तरह के चश्मे से हम उसको मोल लगाने का प्रयास नहीं करना Or measuring, you know, the quality of the sentimentality of your heart or your emotion. या हमारा जो ये भावुक हृदय है भावनात्मक हृदय है उसके आधार पे हमें निर्णय नहीं करना चाहिए That's why we need a guru. इसीलिए हमें गुरु Because without the guru, we'll not understand adhikar. गुरु के बिना हम अपना अधिकार नहीं कर पाएंगे And we remain
deaf, dumb, and blind. और हम अंधे गूंगे और बहरे हम बने This रहेंगे। pride, arrogance, conceit, it makes you blind. तो ये दंभ, अहंकार, दर्प ये आपको अंधा बनाएगा। Krishna says if you're puffed up, you have big false ego, you cannot hear anything, then you're deaf. कृष्ण बोलते हैं अगर आपका मिथ्या अहंकार है बहुत बड़ा तो आप बहरे हैं, कुछ सुन नहीं सकते। So the pride makes us blind and deaf, तो ये दंभ हमें अंधा और बहरा बनाएगा। and will not understand, will misunderstand everything. और हम कुछ समझेंगे नहीं, आप चीजों को गलत समझ पाएंगे। Then we'll be acting like a dumb person. तो हम एक बेवकूफ व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। So that's what it means, deaf, dumb, and blind. ये है उसका मतलब, अंधा, गूंगा और बहरा। But we think, I don't think I have a big false ego. लेकिन हम कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता मेरा मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा है। I'm listening, I'm hearing, I'm not deaf. मैं सुन रहा हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ। I'm functioning, I'm not dumb. मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। So it's very subtle. ये बहुत ही सूक्ष्म है। So the Guru is trying to help us to understand what is the reality of our situation. गुरु हमारी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं ये समझ पाने के लिए कि हमारी असल स्थिति क्या है। But we don't want to hear that. लेकिन हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। We want to just believe and accept what we think about ourselves. तो हम उसी पे विश्वास करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं जो हम अपने बारे Just में stay सही in this सोचते kind हैं। of, false ego, ignorance platform. और हम उसी तरह के मिथ्या अहंकार और अज्ञान के स्तर पे बने रहना चाहते And हैं। then somehow we're complacent and say, okay, then, I'm all right. और इस तरह से हम थोड़े फिर ढीले ढाले हो गए, तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। Then we're just stuck. You just remain stuck there. तो हम वहाँ केवल अटके रहेंगे, फंसे रहेंगे। But to understand what is the reality, that also is very humbling. लेकिन सच्चाई को अगर आप समझेंगे तो ये आपको बहुत विनम्र बनाएगा। So if we're not prepared to be humbled, तो अगर हम विनम्र बनने के लिए तैयार नहीं हैं, then this is the first level, Krishna says, of getting real transcendental knowledge, is you have to be, humble. और कृष्ण बताते हैं कि दिव्य ज्ञान पाने का पहला पायदान है आपको विनम्र होना होगा। Or allow ourselves to be humble. या अनुमति देनी होगी कि हमें विनम्र बना दिया जाए। That's the service, the job of the Guru, is to help us how to be humble and how to understand when we're being humble. और यही गुरु का कार्य है हमारी मदद करना कि कैसे हम विनम्र बन सके या ऐसी परिस्थिति में हम जा सके जहाँ हम विनम्र हो पाएं। And then we'll understand, actually I have no karma, jnana, yoga, bhakti. I didn't even really start. असल में समझ पाएंगे ना तो हमारे पास कोई कर्म है, ज्ञान है, योग और ना कोई भक्ति। And after years and years and years of practicing, then you're thinking, wow, I never even really started. Wow, that's a shock. और सालों से अभ्यास करने वाला मंत्र पता चलता है कि मैंने तो शुरुआत भी नहीं की, तो ये क्या बड़ा धक्का लगेगा आपको। I never had Sambandha Gyan before. I never had any real connect. Krishna never really accepted me. मेरा तो कोई संबंध ज्ञान ही नहीं था कृष्ण से, कृष्ण ने कभी मुझे अपने संबंध में स्वीकार ही नहीं किया था। Because it says when Krishna sends you bona fide guru in parampara, then he's giving you opportunity that if you accept it, then he's giving you opportunity to be connected in this sambandha gyan or in this relationship. ये कहते हैं कृष्ण आपको एक मौका देते हैं प्रमाणिक गुरु से मिल पाने का और आप उसको स्वीकार करते हैं तब आपको एक मौका मिलता है कि आप संबंध ज्ञान में कृष्ण के We can think we're in a relationship, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम संबंध में हैं, but does the other side acknowledge that? लेकिन जो दूसरी तरफ है क्या वो उस संबंध को स्वीकार कर रहे हैं? That's the question. ये प्रश्न है। Yes, we have eternal loving relationship with Krishna. हमारा नित्य प्रेम का संबंध है कृष्ण के साथ। Yes, the potential is there. जी और वो But if we don't understand and accept his arrangement according to his conditions, then that means we're not accepting that agreement of the offer that Krishna is giving us for this re-establishing this sambandha gyan or relationship. लेकिन अगर हम जो भगवान ने जो हमारे लिए व्यवस्था बनाई उसको समझने का स्वीकार करने का प्रयास नहीं कर रहे, इसका मतलब हम कृष्ण की योजना के प्रति सहमत नहीं हो रहे। We just think, oh, loving Krishna, it's like there's some kind of sentimental, connection. हम कहेंगे कि कृष्ण प्रेम किस तरह का भावनात्मक स्तर का संबंध है। Because God is love, and
now we're connecting in an eternal loving relationship with Krishna. We just think it's like some kind of sentimental, emotional connection. भगवान जो है वो प्रेम है और हमारा उनके साथ किसी तरह का प्रेम है, संबंध है, किसी तरह का भावुक स्तर, भावनात्मक स्तर पे हम अपना संबंध भगवान के साथ बनाने But Srila Prabhupada said love is an action word. बताते हैं कि प्रेम जो है एक So your love for me, Prabhupada said, your love for me will by how you do like this, you'll show your love for me. बताते हैं आपका मेरे प्रति प्रेम है ये तब पता चलेगा जब मैंने आपको बताया ये करने के लिए. So Krishna is making all of the opportunity out of some sincere cry from our soul, and we don't understand it and agree to Krishna's terms of service and his conditions, and agree to that, and check the box, and then start acting according to what is his expectation and requirement for us, then that relationship is not established from our side. Krishna is offering it, but we're not agreeing to his conditions or his expectations of us. तो अगर हमारे किसी तरह से हमारी आत्मा के अंदर थोड़ी बहुत गंभीर और कृष्ण ने उसको सुना और हमारे लिए एक व्यवस्था बनाई, लेकिन अगर हम उस व्यवस्था को समझने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए उसके उन्होंने जो नियम और शर्तें बनाए उस संबंध में उसको हमने टिक मार्क नहीं किया और उसको आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, तो हम सहमत नहीं है उनके संबंध ज्ञान में रहने. So Srila Prabhupada explains, when Krishna sends you bona fide guru and parampara, and you cooperate and agree to follow general specific instructions, then from your side, you are agreeing, that means Krishna has accepted you and you're agreeing, that is sambandha jnana. तो अगर आप किसी तरह से कृष्ण को बताते हैं आपको कभी तरीके से कृष्ण ने गुरु भेजा और गुरु के सामान्य और विशेष निर्देश को पालन करने के लिए आप सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब गुरु कृष्ण ने आपके लिए जो व्यवस्था बनाई है उसके ऊपर आप सहमत हैं. Realizing and engaging in that eternal loving relationship. यानी कि पूरी चेतना के साथ हम अपने आप को लगाने का प्रयास कर रहे हैं उस नित्य संबंध में. Abhidheya, bhajana kriya means going through the process of becoming more and more qualified servant and disciple of Guru Krishna. और अभिधेय का अर्थ है कैसे हम अपने इस प्रक्रिया में स्वयं को इतना लगाकर शुद्ध बना सकें कि हम उनकी नित्य सेवा कर सकें. That means now you're cultivating that relationship. इसका मतलब आप अपने संबंध को और ज्यादा बढ़ाने का It's प्रयास. just like, in material example, when you get married, it doesn't mean, okay, there's an agreement for the marriage, but now you have to learn how to have a relationship with that person, how to cultivate and work in that relationship. It just doesn't automatically, it doesn't mean because you got married like everything's already done. तो जैसे भौतिक जीवन में भी अगर विवाह होता है, अब दोनों जब एक साथ रहे होते हैं तो दोनों को संबंध को आगे बढ़ाना होता है. ऐसा नहीं कि विवाह के बाद ही सारे संबंध अपने आप में बढ़ चुके हैं, आगे धीरे-धीरे संबंध बनता है. क्या होता है? Does it make sense? It has to be cultivated. इस तरह संबंध को बढ़ाने की जरूरत है. So, we're thinking we're cultivating the relationship, but we've not even been accepted by Krishna. हम ये सोच रहे हैं कि हमें संबंध बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक कृष्ण ने हमें स्वीकार तक नहीं किया. If we don't seriously accept Krishna's opportunity अगर हम अभी तक कृष्ण के मौके को स्वीकार नहीं कर and रहे accept his representative that he's sending to us as an agent to reconnect that relationship, और उस व्यक्ति को अगर हम स्वीकार नहीं करते जो कृष्ण ने हमें हमारे पास भेजा है उस एजेंसी से हमारा संबंध उनके साथ स्थापित करने के लिए. and then Prabhupada said, you're thinking you're offering everything to Krishna in a mood of loving devotion, अगर आप सब कुछ भगवान को प्रेम और भक्ति भाव से अर्पण कर रहे हैं. right? Krishna says, if you offer me with loving devotion, a leaf, fruit, flower, and water, I'll accept it. कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में अगर आप प्रेम और भक्ति भाव से एक पत्र, पुष्प, फल और जल देते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ. So if we don't have mercy of Guru and mercy of Krishna and mercy of Guru, then how do we think that we have loving devotion, that what we're offering to Krishna, like he's automatically accepting all of that? तो अगर हमारे पास गुरु की और कृष्ण की कृपा नहीं है तो कैसे हम सोच रहे हैं जो भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो प्रेम और भक्ति भाव से अर्पण कर रहे हैं और कृष्ण उसको स्वीकार कर रहे हैं. Doesn't that mean pure devotional service? इसका मतलब तो शुद्ध भक्ति होता है. Right? No conditions, no material expectations or demands?
तो कोई नियम शर्त नहीं लगा रहे, कोई भौतिक मांग या अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। That's a Brahma Buddha platform. That's after Anartha Nivritti. जो अनर्थ निवृत्ति के बाद होता है। So don't get Krishna's mercy, don't get Guru's mercy, not connected in Sambandha Gyan, not doing Abhideya and, this Bhajana Kriya accordingly, in cultivating that relationship and purifying our heart and consciousness, and then we're thinking that whatever we're doing and offering is like out of love and devotion and Krishna's automatically just accepting it? How's it possible? तो कृष्ण ने हमें मौका दिया है संबंध ज्ञान करने का, ना तो हम उसको स्वीकार करते हैं गुरु के माध्यम से, ना ही हम अभिधेय को यानी कि उस गुरु के निर्देशों को पालन करने या उसको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि अपने आप हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेम और भक्ति भाव से भगवान उसे स्वीकार करते हैं। I remember when I was in, where did I go? Was it, no, where did we go? Not Norway, what was it? Denmark. Oh, Denmark. We went to Denmark. We went for preaching in Denmark. एक बार हम डेनमार्क में प्रचार करने के लिए, And I was explaining this to devotees who had been serving in ISKCON for many years. और मैं ये बातें इस्कॉन के भक्तों को सिखा रहा था जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं। And they were so upset with me बहुत सी नाराज हुए by explaining this. They were like really visibly mad and angry at me. देख के लग रहा था वो पूरी तरह से पागल है, परेशान हो गए हैं। Because they wanted to believe that everything that they offered in loving devotion, Krishna automatically was accepting everything. वो ऐसा मानना चाहते थे कि जो कुछ भी वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं प्रेम और भक्ति भाव से कर रहे हैं, और कृष्ण उसको अपने आप स्वीकार भी कर रहे हैं। And I showed them all the Prabhupada's quotes where Prabhupada says, Krishna will not accept your offering directly. और प्रभुपाद के सारे कथन दिखाए जो प्रभुपाद ने बताया है कि कृष्ण आपसे कोई भी कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे सीधे सीधे। Only if you surrender and accept Krishna's arrangement in his disciplic succession, Parampara, and render that service accordingly, will Krishna even think to accept what it is that you're trying to offer to him. Not directly. जब तक आप परंपरा में आके स्वयं को शरणागत नहीं करेंगे, उसके बाद वो अर्पण सही तरीके से नहीं करेंगे, तब हो सकता है कि कृष्ण उसको स्वीकार करें। Now naturally, when we first came, we don't have a guru, we don't know the Vedic culture, we don't know, the Shastra, we don't know anything, So we're just trying to serve God, and we want to, love Him and serve Him and please Him, right? So Krishna knows, okay, you're sincere in your offering. Okay, now here's how you have to qualify yourself. Here's what you need to do in order for me to ultimately accept what it is that you are trying to offer to me. जब हम शुरुआत में आए तो हमें वैदिक संस्कृति का ज्ञान नहीं था, हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं था, हमें असल में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और लेकिन फिर कृष्ण ने देखा हमने थोड़े बहुत भाव से अर्पण करने का प्रयास किया, पर उसको देख के हमें एक प्रक्रिया देने का प्रयास करें, इसके माध्यम से हम स्वयं को योग्य बना सकते हैं। ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपकी सेवा स्वीकार की जाए। Don't fall asleep on it. If you fall over, you're going to kill a few people. It's like a tree in the forest, You smell a tree and crush, You just did one of those. I'm like, the front row of the ladies will be finished. You stay upright, So, now if these devotees they all have gurus, they're all serving in ISKCON, they're all doing right. If you're so well situated, why would you get angry by this explanation? सारे ISKCON के भक्तों के पास गुरु हैं, वो ISKCON की सेवा कर रहे हैं, तो जब मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी से वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? That's a very interesting reaction. बहुत ही दिलचस्प प्रतिक्रिया। Do you have some doubt about some aspect of the connection? Were you thinking you're just offering to Prabhupada? आपको I remember one devotee, when I started preaching in Armenia,
And he was saying that my guru is Bhaktivinoda Thakur. मुझे याद है कन्या में संचार कर रहे एक बात ने कहा कि मेरे गुरु जो है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर Seriously. So it's like anybody can just like pick some previous acharya and say, you know, he's my guru. Like, it's not. It's nice that you have love and affection and appreciation for their personality, and in some sense he is our guru. But that's not the way it works. It's not the science. इस तरीके से कार्य नहीं करता कि आप मैं कोई एक नाम को उठाकर उनको गुरु बना ले अवश्य वो हमारे गुरु हैं उनकी शिक्षा है लेकिन ये प्रक्रिया इस तरीके से काम नहीं करती Right? So you offer to your guru, and then he offers to his guru, and then he offers to his guru. In this way, it finally gets to Krishna. It's being offered up through the parampara, not directly. You just jump over everyone. Oh, Krishna, here, that's for you. You know, it doesn't work. जो भी आप अर्पण कर रहे होते हैं ये अपने गुरु को और वो गुरु उनके गुरु को वो गुरु उनके गुरु को इस तरह से धीरे-धीरे पहुंचते हैं कृष्ण के पास आता है ऐसा नहीं कि आप सीधे उठा के सीधे कृष्ण के पास फेंक दें कृष्ण ये आपके लिए Prabhupada said, you know, can you just walk up to the President of the United States, or you wouldn't want to, but, you know, walk up to some Prime Minister, right, and just say, you know, I need to talk to you and I got to give you something. It's like, who are you, know? Even materially, this is not even practical. तो भौतिक दृष्टिकोण से अगर आपको राष्ट्रपति से मिलना हो प्रधानमंत्री से मिलना हो तो ऐसा नहीं कि जाके आप सीधे जाके उनसे मिल लेंगे कि मेरे पास आपके लिए कुछ है देने की बात But we've been sinful rascals for how long, and now all of a sudden we're forced to surrender. We got to offer something because we're hungry, and then Krishna's like, he has to accept this directly from us. It's like, really? That's a lot of stuff in there, huh? We really know the science, huh? इतने सालों से हम बस बात करते हैं आप अचानक से हम भगवान को कुछ अर्पण करने जा रहे हैं वो भी इसलिए कि हमें खाना है तो और हम मान रहे हैं कि I'm offering with love and devotion. I'm hungry. I got to spiritualize this food. Otherwise it will contaminate my consciousness. And then Krishna's telling all the gopis and the cowherd boys, you know, excuse me, this one person needs to spiritualize this food. I'm just starving, you know. Others showed that everyone has to like wait till Krishna comes back because you're making your offering, you know. Wow, we are assuming a lot. Think about it. That's why if we don't understand the science, you know, then we'll misunderstand everything. Then it's emotion. Then you're hearing, well, you know, so and so told me this. You just take bits and pieces from what everybody said and whatever they told you and whatever you think you've read, and we're just concocting some type of understanding, which is not accurate. It's not scientific. So why should we expect that that's going to work and then we're going to get a result? If you're avoiding the science, you're not going to get the result. And then you look like, oh, but with all this sincerity, and you know, doesn't work. It's not working. तो अगर आपको विज्ञान पता नहीं है आप समझते नहीं है किस तरीके से कार्य करता है और आप किसी तरह के भावनात्मक स्तर पे भावुक स्तर पे हैं आप सोच रहे हैं आप जो अर्पण कर रहे हैं आपके भाव से लेकिन आपको परिणाम उस तरह का नहीं मिल रहा और फिर आप कह रहे हैं कि मैंने गंभीरता से लेकिन इस तरह से अर्पण करने का प्रयास किया And then when you say what it takes for Krishna to accept it, you're like, oh, that's too much information, it's too tedious, it's too much details, now I don't even know if I want to do this. What happened to your bhakti? What happened to your loving devotion? तो कृष्ण आपको विश्लेषण देने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से विज्ञान कार्य करता है तो इतने सारे डिटेल देकर आप कह रहे हैं वो इतनी सारी चीजें हैं ये तो मैं करना नहीं चाहता आप करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हो गया So you just throw in some plate, you know, it's like, you know, I need you to spiritualize this, you know. Oh, that's what loving devotion. जैसे आप कुछ प्लेट है भगवान की तरफ फेंक दे रहे हैं कह रहे हैं भगवान को इसको आध्यात्मिक बना दीजिए ये हमारा Because otherwise you're not going to accept it. So then you just say, okay, I know it's supposed to be loving devotion. So here's my loving devotion. This is like you put some kind of like
mental, emotional power into that offering, into that food somehow. उस खाने में किस तरह से हमारे मन की और शक्ति को हम उसमें डालने का All my loving devotion into that offering. मैं अपना प्रेम और भक्ति जो है इस अर्पण में भगवान के भोग में डालने वाला And then somehow that will trick Krishna. और किस तरह से हम कृष्ण को ठग पाएंगे Right? I mean, really? क्या असल में कर पाएंगे Think about it. सोचिए इसके बारे में These are all the subtleties that we have to learn. It's scientific, but it's also very subtle. ये सारे सूक्ष्म गुणाएं हैं और सूक्ष्म चीजें हैं बहुत ये वैज्ञानिक बातें हैं लेकिन ये हमें सीखने की जरूरत है जानने की जरूरत है And then you think, well, for 10, 20 years I've been offering with loving devotion. You know, does that mean Krishna never accepted anything I offered? And it's like, not really. It's like they're ready to jump off the bridge, you know? भगवान को प्रेम और भक्ति से अर्पण करने का प्रयास कर रहा था तो भगवान ने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया इसका मतलब हाँ असल में नहीं स्वीकार कर रहे सुनने के बाद तो आप ब्रिज से कूदने की तैयारी करेंगे You're looking for a high enough building, you know? आप देखेंगे कि कौन सी जो है ऊंची इमारत है कहीं ढूंढने का प्रयास Minimum 6 stories, right? कम से कम 6 तला इमारत कम से कम होनी चाहिए That's why they don't build the buildings so high. You ever notice that? No one can go over 6 stories. कोई भी 6 तले से ऊपर नहीं बना There's some tattva behind that. I'm just joking. Don't be like everyone's afraid of suicide rates if it's over 6 stories, you know? I told you that. You're Murali Krishna Swami. कौन सी महाराज की Told you about this guy. मुझे पता था यही ऐसे बात Krishna. So that's why Gurudev said, there's no loss. It's kind of like a nice way of saying, no, you didn't get in again. But there's no loss. कोई नुकसान नहीं So है don't feel bad. बस ये कहने के कुछ उससे लाभ हुआ है लेकिन उसको दूसरे तरीके से लाभ नहीं What do you mean there's no loss? That means there's no gain. इसका क्या मतलब है कोई नुकसान है मतलब कुछ हुआ नहीं लाभ उससे And, you know, whatever sincerity is there in any of those offerings, that's what brings you, that's why Krishna may send you a bona fide guru, because whatever we do offer in sincere loving affect, in a loving and affectionate and a desire to want to become really nice devotee, that's what's, you know, giving us the opportunity for Krishna to give us such a guru who will help us, that Krishna will accept your offering. अगर हमारे अर्पण में कोई भी एक निष्ठा थी तो उसका परिणाम ये होगा कि आपको प्रमाणिक गुरु मिलेगा जिसके माध्यम से वो आपकी मदद करेंगे योग्य बनने के लिए जिसके माध्यम से वो सारा अर्पण आपसे स्वीकार करेंगे यानी कि आपकी एक निष्ठा को उन्होंने भगवान ने इस तरीके से So it's not that there's no sincerity there, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई एक निष्ठा नहीं है but if we do not get the first installment of Krishna's mercy by him sending us a bona fide guru in his parampara, that means we didn't even get the first installment of his mercy. So then, how sincere and serious are we? अगर हमें कृष्ण की पहली कृपा भी अभी तक नहीं मिली है हमारी यानी कि हमारी एक निष्ठा की वजह से उन्होंने प्रमाणिक परंपरा से हमें नहीं भेजा ऐसा मतलब हमारी एक निष्ठा पे सवाल है But shouldn't you get the first installment if we're so sincere and serious? अगर हम इतने एक निष्ठ हैं तो कृष्ण की सबसे कृपा की सबसे You're पहली looking किस्त for के other बाद installments? आप दूसरे और किस्त की आपको कौन सी किस्त लिखनी है Get the first installment. सबसे पहला आप कीजिए Does it make sense? Have I misunderstood something? Please correct क्या मैं कुछ me. गलत समझ बैठा हूँ आप लोग अगर कुछ Not सही being accurate. अगर मैं कुछ सही बातें नहीं कह रहा I'll read you one thing. तो एक चीज पढ़ूंगा This is a big conversation, but there's one. ये बहुत It's talking about how to surrender to Krishna, how to come out of this illusion due to this asatsanga.
बहुत लंबी चर्चा है, बहुत ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपने मुंह से निकल के असल में कृष्ण को साकार कर सकते हैं। Prabhupada's talking in the 15th chapter of Bhagavad Gita, बात कर रहे हैं 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, the yoga of the Supreme Person, पुरुषोत्तम योग, text 3 and 4. श्लोक संख्या 3 और 4। So it's saying the material world is a perverted reflection of the tree of the spiritual world. बताया जा रहा है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक उल्टा प्रतिबिंब है। And Krishna is saying that that real form of this original spiritual tree in the spiritual world, it cannot be perceived in this world. कृष्ण बता रहे हैं कि उस आध्यात्मिक वृक्ष का असल रूप इस जगत में कल्पना नहीं किया जा सकता। That Shuddha Sattva platform, Shuddha Sattva tree. वो शुद्ध सत्व स्तर पे शुद्ध सत्व वृक्ष है। You cannot perceive that tree from this world. इस जगत से उस वृक्ष की हम कल्पना नहीं कर सकते। Krishna says no one can understand where it ends कृष्ण कहते हैं कोई ये समझ नहीं सकता इसका अंत कहाँ होता है or where it या begins ये शुरू कहाँ से होता है or where its foundation is. या इसकी नींव कहाँ है। But with determination, Krishna is saying one must cut down this strongly rooted tree, this material tree, with the weapon of detachment. और कृष्ण बताते हैं बहुत ही दृढ़ता से इस वृक्ष के जड़ को काटने की जरूरत है। इस भौतिक वृक्ष के जड़ को विरासती से। And thereafter one must seek that place from which having gone one never returns. और उसके बाद ऐसे जगह को ढूंढने की जरूरत है जहाँ जाने के बाद कभी आपको वापस ना आना पड़े। And there surrender to that Supreme Personality of Godhead. और वहाँ उस परम पुरुषोत्तम भगवान को शरणागत करें। From whom everything began. जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। And from whom everything has extended since time immemorial. और जहाँ से सब कुछ विस्तार हो रहा है अनंत काल से। And the Prabhupada says, बात तात्पर्य बता रहे it हैं। is now clearly stated that the real form of this banyan tree cannot be understood in this material world. बताया जाता है कि इस वट वृक्ष के असल रूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। Where it begins, where it ends, how it's going. Yet, one has to find out what is the cause. ये कहाँ से शुरू होता है, इसका अंत कहाँ है, इसकी नींव कहाँ है, समझा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हमें ये सोचने की जरूरत है इसका कारण क्या है। Then Prabhupada says, I am the son of my father. तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं फिर मैं अपने पिता का पुत्र हूँ And my father is the son of such and such a person. और मेरे पिता एक व्यक्ति के पुत्र हैं Who is the son of such and such a person. और वो किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र हैं। So by searching in this way, one comes to Brahma, और इस तरीके से खोज करते हुए आप ब्रह्मा तक पहुँच जाते हैं। who is generated by the Gavadakshayi Vishnu. और जिनकी उत्पत्ति हुई गर्भोदक्षाय विष्णु से। So finally, in this way, when one reaches the Supreme Personality of Godhead, और जब कोई इस तरीके से परम पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँचता है, that is the end of his research work. तो वहाँ पे उनका खोजबीन खत्म हो जाएगा। So this is talking about conditioned souls in the material world who search up to the original Father in the material world, means Lord Brahma. तो ये उन पद जीवों की कहानी है जो अपने भौतिक पिता को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। खोज के अंत ब्रह्मा जाकर खत्म होता है। Because Lord Brahma is not in the spiritual world. क्योंकि ब्रह्मा आध्यात्मिक जगत He's में in the material world. वो इस भौतिक जगत में। So you have to search all the way up to Lord Brahma अपने साथ खोज करते हुए ब्रह्मा तक पहुँचना होगा। and then understand that he is generated by the Gavadakshayi Vishnu. ये समझना होगा कि उसकी उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु से हुई। So Gavadakshayi Vishnu is the father who generated Lord Brahma, who is our original father in the material world. गर्भोदक्षाय विष्णु के माध्यम से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जो ब्रह्मा के पिता हैं इस भौतिक जगत। So in every universe there's a Gavadakashayi Vishnu in every
universe. हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विश्व है। And then there is Brahma और एक or ब्रह्मांड Brahmas या in बहुत that सारे universe ब्रह्मा उस ब्रह्मांड में who are the progenitors of all the other mankind. जो प्रजापति हैं सारे मनुष्यों के। So Prabhupada says, so finally in this way, when one reaches the Supreme Personality of Godhead, तो बता रहे हैं इस तरीके से कोई परम पुरुषोत्तम भगवान तक that पहुंचता is है the end of the research और world. यहाँ पे उनका खोजबीन खत्म होगा। He's talking about Vishnu तो यहाँ पे विष्णु की बात in the है, material world. जो भौतिक जगत है। Interesting. बहुत दिलचस्प बात है। So this is what I was originally going to talk to you about. Do you guys have patience? Yes. No. मूल रूप से मैं ये बातें करने के लिए आया था, आप लोग Because we were going to talk about this. कि हम इसके बारे में बात करने वाले And हैं। then we go on to all these other और topics. फिर उसके बाद हम फिर और दूसरे विषयों पे जाएंगे। If you have to sleep, go to sleep, no problem. अगर आपको सोना है तो आप जाके सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं Whoever है। can stay awake, that's also good. और जो लोग जगे रह सकते हैं, And Adam, don't crash anyone out. Yeah. आदम आप किसी और लोगों को मत गिरा दीजिएगा। So Prabhupada saying that one has to search out what is the origin of this tree. तो बात बता रहे हैं किसी को इस वृक्ष के कारण को समझने की जरूरत है। And that is the Supreme Personality of Godhead. वो है परम पुरुषोत्तम भगवान। So this in material world is Gavodakshayi Vishnu, तो भौतिक जगत में है गर्भोदक्षाई विष्णु, who is also non-different from Krishna, जो कि कृष्ण से who is अभिन्न है, Supreme Personality of Godhead. जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है। One has to search out that origin of this tree in the material world. और किसी को उस कारण को समझने की जरूरत है इस भौतिक वृक्ष की। Through the association of persons who are in knowledge of that Supreme Personality of God. उन व्यक्तियों के संग में जिनको उन परम पुरुषोत्तम भगवान के विषय में ज्ञान हुआ। So then Srila Prabhupada, he was talking on Chaitanya Charitamrita Madhya Leela तो श्री प्रभुपाद चैतन्य चैतन्य के मध्य लीला में बता रहे हैं 2172. 20:172। And this is December 14, what's the date today? 17. So December 14, 1966 in New York. 14 दिसंबर 1966 न्यूयॉर्क में बता रहे हैं। I don't know how far we're going to go, but let's try मुझे something. पता नहीं हम कितनी यहाँ पे तक जाने वाले हैं, लेकिन चलिए हम प्रयास करते हैं। It's very much related to Jiva Tattva. ये जीव तत्व से बहुत हद तक संबंधित है। So, these are plenary portions of the Supreme Personality of Godhead. तो ये सब भगवान के अंश अवतार हैं। So Sankarshan is incarnation of Krishna. संकर्षण कृष्ण के अवतार हैं। Right? So all the incarnations, all the avatars of Krishna, Krishna is avatari, is the source of all the other avatars. तो ये सारे अवतार कृष्ण से आते हैं, कृष्ण सारे अवतार विष्णु हैं अवतारी। And so from Sankarshan, there are three expansions: Vishnu, Mahavishnu, Gavadakshayi Vishnu, and Shirodakshayi Vishnu. इसलिए संकर्षण से महाविष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं। So from Sankarshan, Mahavishnu, when the whole material world is created, तो संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से सारे भौतिक जगत की सृष्टि होती है। from Mahavishnu, all the universes are generated, महाविष्णु से सारे ब्रह्मांडों का रचना की जाती है। and then in each of the universes, Gavadakshayi Vishnu is expanded there. और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाकर विस्तार करते हैं। This Gavadakshayi Vishnu enters into each universe, और ये गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। and then in each universe from Gavadakshayi Vishnu, Shirodakshayi Vishnu is then expanded, और हर एक गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु विस्तार करते हैं। and then from that Shirodakshayi Vishnu, the expansion, there's a Paramatma.
और वो शीलोदक्षता विष्णु से विस्तार होते हैं परमात्मा is distributed in everybody's heart. और वो सभी जीवों के हृदय में वितरित करते Krishna हैं says in Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhutanam Hrideshe Vijuna Tishtiti. That Krishna says, I'm in the heart of every living entity. और कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित हूँ So Krishna, as Shiradaksha Vishnu, is Paramatma Super Soul within the heart of every living entity. कृष्ण और शीलोदक्षता विष्णु परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में मौजूद हैं So a devotee of Krishna knows that that Shiradaksha Vishnu is actually Krishna manifested in the heart. तो कृष्ण के भक्त ये जानते हैं कि शीलोदक्षता विष्णु असल में कृष्ण है जो उनके जीवों के हृदय में शीलोदक्षता विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं I'm gonna a little bit jump, Prabhupada, just emphasizing all these same exact points. तो प्रभुपाद कोई एक ही बातों पे आगे जारी रखे बताना तो मैं थोड़ा आगे जाके So from the Shiradaksha Vishnu Paramatma expression of Super Soul is in every living entity. तो शीलोदक्षता विष्णु से परमात्मा सभी जीवों के हृदय में जाते हैं So these incarnations of the Lord, they are innumerable. तो You cannot count how many times and ways that Krishna is incarnating. तो कृष्ण के अवतार असीमित हैं आप यहाँ तक कि गिनती भी नहीं कर सकते कृष्ण के कितने सारे असंख्य अवतार But Prabhupada said generally these incarnations are divided into 6 divisions. प्रभुपाद बता रहे हैं लेकिन सामान्यतः इन अवतारों को 6 भागों में बांटा जा सकता है Purusha avatar, पुरुष अवतार Lila avatar, लीला अवतार Guna avatar, गुण अवतार Manvantara avatar, मनवंतर अवतार Yuga avatar, युग अवतार Shakti-avesh avatar. सत्यावेश अवतार This is very important, Prabhupada said. प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत ही So there are महत्वपूर्ण 6 incarnations, kinds of incarnations of the Supreme Personality of Godhead. तो 6 तरह के अवतार हैं परम पुरुषोत्तम भगवान के The first one is Purusha avatar. These are the Vishnus. These are the 3 Vishnus: Mahavishnu, Gavadakshayi Vishnu, and Shiradakshayi Vishnu. तो पहला है पुरुष अवतार जिसमें महाविष्णु शीलोदक्षता विष्णु और गर्भोदक्षता विष्णु आते हैं They're called Purusha avatars. इनको पुरुष अवतार कहा So Krishna, God, sometimes He manifests Himself as incarnation of fish. तो कभी-कभी कृष्ण अपने आप को अवतार लेते हैं एक मत्स्य के रूप में That's Krishna. वो कृष्ण है Sometimes He incarnating as a fish, कभी-कभी वो एक मत्स्य का रूप लेता है incarnation of a hog, कभी एक सुअर का incarnation of a lion, कभी शेर का incarnation of Rama. राम अवतार Rama is also Purusha avatar, राम भी and पुरुष Lila avatar. और उसके बाद लीला अवतार So when Krishna wants to give prema, then He comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. और जब कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं तो उसकी चैतन्य महाप्रभु के When He wants to set up perfect society and teach all of the different roles, He comes as Lord Ram. और जब कोई का पूर्ण समाज को स्थापित करके He सही wants to नीति stop नियम को स्थापित violence. करना चाहते हैं And then using the Vedas, He comes as this, what is it? The Buddha. और जब वो हिंसा को खत्म करने के लिए वेदों के अस्तित्व को खत्म करने के He लिए wants to protect His devotees. He's come Lord Nishigadev. और जब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं तो ऋषि का देव So that's Krishna. He's avatar. He's just coming and manifesting in different incarnations. तो वो कृष्ण है अवतार ही बल्कि वही अलग-अलग रूपों को लेकर प्रकट होते So it's still the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. और फिर भी वो परम पुरुषोत्तम But भगवान coming in different forms, bodies, times, place, circumstance for a particular mission or lila. लेकिन अलग रूप में अलग व्यक्ति के लिए अलग क्षेत्र में अलग लीला करने के लिए अलग चीजों को प्रस्तुत करते So which Krishna are we coming from? हैं तो हम इनमें से कौन से कृष्ण से हम आ रहे हैं Which Bhagavan are we coming from? कौन से भगवान से हम आ रहे हैं So yes, we came from Krishna. Jesus is the giving father of all living entities. कृष्ण सभी जीवों के बीच प्रदाता But पिता how is He delivering those seeds? In which way? In which form? वो ये सारे बीज कहाँ देते हैं किस रूप में देते हैं All these 3 avatars, they are in the material world. तो ये सारे तीन अवतार We have to take shelter of this Vishnu avatar mode of goodness. तो जो ये कृष्ण अवतार जो सतोगुण में है
So God's kingdom is not vacant. तो भगवान का राज्य कभी खाली नहीं रहता। Just like we're thinking that except the earthly planet, all the planets are all vacant. जब हम सोचते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर सारे अन्य ग्रह पूरे खाली हैं। I mean, you think about arrogance, right? You have आप तो unlimited unlimited planets and unlimited universes, and everywhere except Earth, they're all just vacant places. आप देखिए क्या आकड़ है, इतने असीमित ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ग्रह हैं, पृथ्वी को छोड़ के सभी खाली हैं। Like this is the only place that has any color and any people on it. यही एक मात्र जगह है जहाँ रंग है और लोग हैं। So somebody probably says, suggesting it's just a lump of ashes. तो प्रभात को किसी ने सुझाव दिया ये केवल राख का ढेर है। Just like they're thinking this moon planet, it's just a lump, it's like a lump of dust. It's just जैसे वो dust, सोचते हैं dirt, ये rocks. चंद्रमा ग्रह है, ये बस धूल का ढेर है, पत्थर है। But Srila Prabhupada said, I cannot, of course, I cannot think like that. लेकिन शुरुआत में अवश्य मैं ऐसा नहीं सोच सकता। How can all of this dust remain in some big lump, the moon, right? But how much illumination can then be coming out of this dust? तो कैसे ये धूल एक जगह एकत्र है चांद के रूप में और वहाँ से इतनी रोशनी आ रही है। If it's just a bunch of dark dust, dirt, rocks, right? Why is so much illumination is coming out of the moon? Where's the illumination coming from? अगर ये केवल धूल का ढेर है और फिर वहाँ से इतनी ज़्यादा रोशनी कैसे आ रही है? But they're putting this theory that the moon planet is just a lump of dust and dirt. लेकिन वो ये बातें बता रहे हैं कि ये चंद्रमा ग्रह है ये केवल धूल है। But it's putting off all of this illumination that we're seeing it from all the other planets in the universe. लेकिन ये इतनी सारी रोशनी प्रकट कर रहा है अलग-अलग ग्रहों से रोशनी आ रही है। So they're putting this type of theory there. Let them do it. But from the scriptures, we understand that there are innumerable universes, and in each and every universe is full with innumerable planets, and in each planet is full with innumerable living entities. और इतने सारे जो मानना है वो मानने दीजिए, लेकिन वैदिक आधार पे हम ये जानते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड असंख्य लोक हैं और ये सारे पूरी तरह से भरे पड़े हैं असंख्य जीवात्माओं So से। each planet has innumerable living entities in all the planets in the universe with unlimited universes and planets and living entities. तो असंख्य जीवात्मा असंख्य ग्रहों में असंख्य लोक असंख्य ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं। And God's incarnation is working somewhere. और भगवान का अवतार हर एक जगह Somewhere or other, how to reclaim all of these conditioned souls. किसी तरीके से हम कैसे इन बद्ध जीवात्माओं को वापस लेकर जा सकते हैं। So yes, it's Vishnu, Gabadakshayi Vishnu. तो अवश्य ये विष्णु है, गर्भोदकशाही This विष्णु is Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. और ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है। But if you're searching up from the material planet, you're coming to Lord Brahma, then you're going to Gabadakshayi Vishnu, who generated Lord Brahma. The Prabhupada said, then your research stops there. तो अगर आप भौतिक लोकों से आगे बढ़ रहे हैं तो आप ब्रह्मा तक पहुंचेंगे और ब्रह्मा का कारण है गर्भोदकशाही विष्णु, तो वहाँ पे आपका खोजबीन खत्म हो जाता है। That is the end of your research work. वो आपके खोजबीन का अंतिम लक्ष्य है। So that Vishnu is Krishna. तो ये विष्णु ये कृष्ण है। So yes, we're coming from Krishna. We're coming from, but which Krishna? हम कृष्णा से आए हैं, लेकिन कौन से कृष्ण? That's the question. ये प्रश्न है। Right? You're trying to tell a bunch of people, right, who are atheists or impersonalists, तो कुछ ऐसे लोग जो या तो नास्तिक हैं या मायावादी हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं। or Christians or Jewish people, या ईसाई या जूस लोग, right? And you're trying to get them to leave their culture, leave their misconception, leave their limited understanding, and even their religion,
to understand about Krishna, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. हम उसको कह रहे हैं कि उनको सब कुछ जो संस्कृति सभ्यता पालन कर रहे हैं, जो धर्म पालन कर रहे हैं, उसको छोड़कर वो कृष्णा के बारे में समझने का प्रयास करें। But what's interesting is Prabhupada is in New York in 1966 explaining about the different Purusha avatars. लेकिन सबसे अनोखी बात ये है कि प्रभुपाद 1966 में न्यूयॉर्क में अलग-अलग पुरुष अवतार के बारे में बताते हैं। Prabhupada said, so why don't you just call it International Society for God Consciousness? ये प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद आप इसको अंतर्राष्ट्रीय भगवान भावना समझ And Prabhupada said, no, because our final destination is Krishna Loka, Golok Vrindavan, and we are worshipping Krishna as the Supreme Personality of Godhead, as Avatari, in order to reach that final goal. और लेकिन प्रभुपाद ने बताया आपसे पता है कि कृष्ण ही है परम पुरुष भगवान और हमारे आंदोलन का लक्ष्य है कृष्ण भावना और अंत में उस लक्ष्य तक पहुंचना कृष्ण तक पहुंचना। So it's Krishna, but he's coming in different ways and forms in order to create, to manifest, to teach all of these different functions that he's, how and why he's coming. कृष्ण ही है लेकिन अलग-अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, कभी कुछ शिक्षा सिखाने के लिए, कभी कुछ लीला करने के लिए अलग-अलग रूपों में। There's eternally liberated souls and eternally conditioned souls. तो नित्य सिद्ध जीव है और नित्य बद्ध जीव। I mean, think about it. If there's unlimited universes and unlimited planets, सोचिए इसके बारे में असीमित and unlimited living entity on those planets, असंख्य जीवात्माएं हैं उन सारे लोगों में, right? That's just 1/4 of the total creation. और ये केवल 1/4 है पूरे संपूर्ण सृष्टि का। So 3/4 more than that is the spiritual world. और ये सारे असंख्य लोगों का 3/4 जो है वो असल में आध्यात्मिक जगत है। That's pretty far out, isn't it? तो ये काफी लंबी बातचीत। So Krishna also, he's Patita Pavan, he's savior of the most fallen souls. तो कृष्ण साथ में पतित पावन भी है जो सारे पतित जीवात्माओं को उद्धार करना चाहते हैं। But if everybody is an eternally liberated, Vaishnava devotee of the Lord, then where does Krishna go to be Patit Pavan? लेकिन अगर सारे लोग शुद्ध वैष्णव हैं और भगवान के नित्य पार्षद हैं तो कैसे लोग बद्ध जीवों को ढूंढने का पतित पावन बनते हैं? Everything has to be complete, right? Nothing can be missing. तो सब कुछ पूर्ण होना चाहिए। भगवान की This idea of being most magnanimous and merciful and compassionate and savior of the fallen souls, well, how do you live that part of the personality of the Supreme Lord, which everybody more or less kind of mirrors in the material world, that has to originate with Krishna? Well, how does Krishna do all of that if there's no fallen souls? तो अगर कृष्ण ये रूप प्रकट करना चाहते हैं कि ऐसे सबसे कृपालु पतित जीवात्मा का उद्धार करना चाहते हैं तो इस लीला को करने के लिए अगर कोई बद्ध जीव नहीं होंगे पतित जीव नहीं होंगे तो वो कितना उद्धार करने की भूमिका निभा And it's सकते very difficult to explain that because people are suffering and they're going through all these reactions and karma pala, right? And you're like, you were selected for this. ये बहुत मुश्किल है लोगों को समझा पाना क्योंकि लोग अपने कर्मों के आधार पर इतने ज़्यादा दुख पाते हैं और उनको अगर ये बताया जाए कि आपको बनाया है कि यह ऐसी परिस्थिति के लिए You're very lucky. You're selected as an eternally conditioned soul that has to go through cycles of 8,400,000 species of life since time immemorial, going through birth, death, disease, and old age. You're going to tell this to a brand new person who's just trying to come to Krishna consciousness? तो अगर किसी को यह जगह बताया जाए आप बहुत भाग्यवान हैं आपको चुना गया है नित्य बद्ध जीव बनने के लिए और जन्म मृत्यु के चक्कर में निरंतर 84 लाख योनि में दुख भोगते रहने के लिए एक नया व्यक्ति जो आता है कि आप उसको ये सारी बात सिखाएंगे 3/4 of the rest of creation are all eternally every day living this ecstasy and not experiencing any type of suffering or pain or disturbance? और इस पूरी And you're asking me to surrender and love this personality? Is that what I'm understanding?
तो और ये संपूर्ण सृष्टि का जो 3/4 भाग है उसमें से सारे लोग नित्य शुद्ध के रूप में हमेशा आनंद में और भगवान के साथ आनंद में है और आप कह रहे हैं कि मैं इस 1/4 भाग का सदस्य हूँ और मुझे ऐसे व्यक्ति को शरणागत करना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। So you want Prabhupada to give everyone that information from the beginning? तो आप चाह रहे हैं कि प्रभुपाद ऐसी जानकारी ऐसे लोगों को दें शुरुआत में ही। Krishna, somehow or other, in other words, don't bother your head, Somehow or other it happened, such like that, but anyway, whatever happened, happened. Now, try to solve the problem of your life. Understand that Krishna, you have an eternal loving relationship with God, and He's giving all opportunity for you to help, qualify yourself and get free from your suffering and anxiety and go back to the highest planet to be directly with Him in Goloka Vrindavan. Just focus on that. किसी तरीके से आप कृष्ण के साथ थे मतलब असल में वही कहना चाहिए अपना सर मत लगाइए कि कैसे आप वहाँ थे ये पता लगाइए कि कृष्ण ने आपको मौका दिया है कि आप अपने आप को स्वयं को शुद्ध बना सकते हैं योग्य बना सकते हैं और इस रास्ते पे आगे जाके अंत में कृष्ण के साथ रह सकते हैं। God had this desire to be the savior of the fallen souls, so you were selected to suffer since time immemorial so He could feel nice about saving the fallen souls. भगवान जो है दुख में जीवों को बचाना चाहता है तो आप वो चुने हुए लोग हैं जिनको जो है जन्म से दुख में डाला गया है ताकि भगवान की इच्छा पूरी हो सके कि वह दुख में जीवों को दुख से बाहर निकाले। Think about that. How are you going to get some brand new person to let me fully surrender to this God, भगवान के बारे में ऐसा विवरण देंगे और कहेंगे आपको ऐसे भगवान को शरणागत करना है तो कैसे भगवान को शरणागत कराया जा सकता है। It's like, some guy wants to help the African Americans in the inner city in America, And he's like, I want to help people, I just need some place that's like a bunch of poor people who are suffering, so I can, feel good about giving back to humanity, It's like people like that are criticized in the material world, isn't it? You come and you hand out some turkeys or some pair of shoes or something like that, right? It's pathetic, right? It's like God is just, I need to create some suffering, fallen souls, because, I just want to live out this desire to be seen as compassionate and merciful and the savior of the fallen souls. So anyway, you guys were selected, be happy. तो भगवान ने इसी तरह से This is what Prabhupada is supposed to explain to everybody. भगवान ने ये निर्णय किया है कि वो इच्छा पूरा करना चाहते हैं कैसे दुख में और पति जीवों की मदद की जा सके। आप वो चुने हुए लोग हैं जो दुख में और पति जीव भगवान ने आप लोगों को बनाया है और भगवान आप लोगों की मदद करेंगे बस अपनी इच्छा को पूरी कर लीजिए। But don't feel bad. I remember one time Gurudev said, what are you complaining about? You could have been a rock. So you're going to go to people that you're trying to get to surrender in some other culture or some other religion and saying, look, don't complain, you could have been a rock. We need some fallen souls right now. How do you explain them? And of course, those fallen souls, and then if you look at in the course of, eternity, what does our since time immemorial mean? It's like it could be a dot, right? It could be like a speck. और But our conception since time immemorial. और जो नित्य समय है उसमें हमारा जो अनंत काल है वो उसमें एक बिंदु की तरह है। Right, but if you look at eternity, there's no beginning and an end, right? Infinity. तो अगर आप नित्य अवस्था को देखेंगे तो उसमें ना तो शुरू है ना मध्य है ना अंत है। So what is our from time immemorial mean? तो हम जो असीमित समय से यहाँ पे हैं वो उसमें Another interesting question. ये एक और दिलचस्प It's kind of like if someone says, since time immemorial, it's like, yeah, it's been a long time, Why
why bother your head with it, you know? It's time immemorial, you know? ऐसा कहते हैं आज से भी समय से है तो इसका मतलब बहुत लंबे समय से है तो क्यों अपना सर उस पे लगाए इतने लंबे समय में That's what Prabhupada said. Anyway, somehow or other, you know, we fell there, you know? so प्रभुपाद ने कहा जो भी हो उसी तरह से हम आगे Like, let's not make this like a big point right now. वर्तमान में इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाएं You know, let's get them off of the drugs. पहले इनका नशा खत्म किया You know, tell them, you know, try to explain to them that they're not God themselves. इससे पहले उनको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि वो लोग खुद भगवान नहीं हैं Krishna. I mean, look at what you're starting with. What are you going to tell them? अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है क्या सिखाया जा सकता है You know, they're all suffering, and you're like, you know, you were selected to be one of the most suffering fallen souls, so God can feel good about saving all the fallen souls. Is that what we're supposed to preach? तो वो पूरी तरह से कष्ट में दुख में है और फिर उनको आप ये जाके बचा रहे हैं कि भगवान ने आप लोगों को चुना है दुख में रखने के लिए ताकि वो आपको दुख से बाहर निकाले ताकि वो उनकी इच्छा लोगों को बचाने की I mean, you asked an honest question, so doesn't it require like an honest understanding? तो आपने एक ईमानदारी से सवाल पूछा तो इसका एक ईमानदारी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता So those conditioned souls, they're coming from the Tatastha region. तो ये बद्ध जीव तटस्थ स्तर से आते हैं So we're put in from Gavadakshi Vishnu, you're put into Tatastha region. तो गर्भोदक से विष्णु से आप तटस्थ स्तर पर And then it says from that region, you can make a choice to go to the spiritual world or go to the material world. और कहते हैं वहाँ से आप एक निर्णय कर सकते हैं या तो आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं या आप भौतिक जगत जाना चाहते हैं Right, so that sounds fair. Like you were put in a situation, right, where you would just make a choice. You want to go to the spiritual world, you want to go to the material world. तो ये सुनने में बिल्कुल सही हमारे लिए लगता है कि हमें एक ऐसी स्थिति में डाला गया जहाँ हम चुनाव कर सकते हैं कि हम या तो भौतिक जगत में जाना चाहते हैं या आध्यात्मिक जगत में. And then when someone asked Srila Govinda Swami this question, well, how many people like go to the spiritual world? तो किसी ने श्री भगवान से ये सवाल पूछा कि कितने लोग उस तटस्थ स्तर से आध्यात्मिक जगत जाते हैं. And Gurudev said, you know, like one or two, like this. गुरुदेव ने बताया एक या दो लोग. Right? So do you want all the details? Everyone's ready for the details? Yes. Then it's like, wait a second, so we're put into a situation, technically we have the right to choose, but we're so weak and fallen that only like one or two choose to go to the spiritual world and everyone else goes into the material world. What kind of an arrangement is that? Free choice is done. तकनीकी रूप से देखें तो हमें ऐसी स्थिति में डाला गया जहाँ हम निर्णय कर सकते हैं कि या हम आध्यात्मिक या भौतिक जगत जाएं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी योग्यता है ऐसे गुण नहीं है जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक जगत जा सके तो हमें भौतिक जगत में आने का निर्णय करना पड़ता है. I don't know if I'm helping or hurting this conversation. But you can understand why you wouldn't want to tell just like a brand new person this, because it's very difficult to understand and to digest that. आप समझ सकते हैं बिल्कुल नए आदमी को ये सारी बातें समझाना कितनी मुश्किल है क्योंकि बहुत मुश्किल है इन सारी बातों को हजम करना. And then the devotee, when Prabhupada disciple, they said to Srila Govinda Swami, then, you know, there's not much of a choice. It's like, then why does even one or two go back there? तो उसके बाद में जिसने चले भगवान से सवाल पूछा अगर वैसे भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तकनीकी रूप से बहुत आध्यात्मिक जगत जाने का फिर भी एक दो क्यों चले जाते हैं आध्यात्मिक. And then Gurudev said, because otherwise there would be incompleteness. तो गुरुदेव ने दिया वरना जो है वो पूर्ण नहीं होगा ये सिस्टम. So there has to be somebody that goes there. तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ऊपर नहीं जाता. But the majority, if not all of them, go into the material world. लेकिन ज़्यादातर हो सकता है सारे नहीं लेकिन हो सकता है एक सारे ज़्यादातर जो है भौतिक. But if you're not contaminated by the ignorance of the material world, why would you make a choice to go there? तो अगर आप इस भौतिक जगत के कला से दूषित नहीं हो ज्ञान में नहीं है तो क्यों आप इस भौतिक Instead जगत of going to में the spiritual world.
तो आपने चुनाव करेंगे वो आध्यात्मिक जगत में जाने का। Right? So you guys have all been around for a long time, and right, and you're all sitting like, this is unbelievable information. आप इसके आसपास में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं तो अविश्वसनीय जानकारी दी जा रही है। And I'm just giving you a taste of it so you can understand why Prabhupada is saying certain things to certain people at certain times. और मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ कि प्रभुपाद ने अलग समय पे परिस्थिति और लोगों के आधार पर अलग-अलग तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया। And then if you understand, well, if we're all coming from Goloka Vrindavan, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सभी गोलोक वृंदावन there's में no modes of material nature, जहाँ कोई there's no sinful desire or sinful reaction, गुण नहीं है, कोई पाप नहीं, पाप करने की इच्छा नहीं, कोई अज्ञान नहीं है, there's no lust, there's no material desire, there's nothing there कोई काम नहीं, कोई that could भौतिक इच्छा नहीं, contaminate कुछ भी you, ऐसा confuse you, persuade you जो आपको दूषित कर सके, आपको भ्रमित कर सके, from leaving that place. उस जगह पे छोड़ने आ सके, So it makes no sense. इसका कोई अर्थ नहीं है। Right? So unlimited living entities on every planet and unlimited universes in the material world, right? They all somehow develop some lust and envy in the spiritual world. तो असंख्य जीवात्माएं और असंख्य ब्रह्मांड असंख्य लोगों में मौजूद हैं। इन सभी लोग ये सभी आध्यात्मिक जगत में थे और इनके अंदर से किसी तरह का कोई काम या भौतिक इच्छा प्रकट हो गई जिसके माध्यम से वो You know, one thing if like, okay, maybe one or two people, right? But like unlimited planets and unlimited universes in this time immemorial with unlimited living entities, right? They've all made a choice to leave, you know, being in Brajabhumi with Krishna and the cowherd boys and cowherd girls to come to the prison house of the material world. Does that really make sense to you? तो हो सकता है एक या दो लोग जो ब्रजभूमि में भगवान के साथ नित्य संबंध में आनंद में हैं वो उस जगत को छोड़कर बाकी जगत में, लेकिन यहाँ असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य लोग, असंख्य जीवात्माएं अनंत काल से इस भौतिक जगत में भी हो रही, इतने सारे लोगों ने ये फैसला किया। How do they get contaminated? ऐसे इतने सारे जीवात्माएं दूषित हो गई। There's some imperfection there. आध्यात्मिक जगत में कोई अपूर्णता है। You know, it's amazing. When I was in Krishna consciousness before I met my spiritual master, I never thought about this topic. I never really thought in my head with this topic. कृष्ण भावनामृत में आने से पहले और मेरे गुरुदेव से मिलने से पहले इन सारे विषयों के बारे में मैंने कभी सोचा तो नहीं था। I was just like, okay, since I'm immemorial, I'm in this situation, I'm trying to solve my problem and get out of here. It's like, I mean, people are losing their minds over this topic. कि मैं अनंत काल से इस भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और यहाँ फंसा हुआ हूँ, इसी भौतिक जगत में घूम रहा हूँ, लोगों का दिमाग फंसा हुआ इस तरह के। They're living and dying on this topic. इस विषय में तो लोग बात करके मर रहे हैं। And you know, I don't quite get it because it never was really an issue for me. और मैंने कभी इसको समझने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मेरे लिए कभी कोई बड़ा कारण नहीं। But the fact that it is an issue for many people, then therefore there needs to be a scientific explanation of why apparently Prabhupada is saying different things, you know, at different times, in different places, to different people, for different reasons. That's why. लेकिन फिर भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है जानना क्योंकि कई बहुत सारे लोगों के भीतर इस तरह की एक प्रश्न है कि प्रभुपाद ने अलग-अलग समय में अलग परिस्थिति में अलग तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया था। But somehow the most fallen souls, they're not going to the 3/4 of Vaikuntha planets. They're going to Goloka Vrindavan. बड़ी खासियत ये है कि ये भौतिक एक चौथाई भौतिक जगत के जो लोग हैं उनको मौका मिलता है गोलोक वृंदावन में जाने का। So if your time immemorial is not even a speck on the scale of infinity, and your experience brings you to Goloka Vrindavan, the topmost planet in the Vaikuntha planet system, which is 3/4 of all the creation, that's a pretty good deal as far as I'm concerned. Don't you think? तो अगर इस नित्य समय में उसमें आप जो अनंत काल से जो कि आपके लिए केवल एक छोटा सा बिंदु है उसमें अगर आपका जो अनुभव है आपको गोलोक वृंदावन लेके जा सकता है तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। And then anyway, you got the point. कोई बात नहीं। Because if you keep driving it, if you keep explaining it, it's like people stop like, that's disturbing to me.
क्या उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और एक बात को बार-बार रखने का Why प्रयास do I करें। have to be, an eternally, conditioned soul? तो Why लोग couldn't परेशान I be होना one of शुरू those होते हैं, eternally liberated souls? क्यों मैं एक नित्य बद्ध जीव, क्यों मैं वो नित्य मुक्त जीव क्यों नहीं था? Then you'd be like, I resent that. फिर आपको लगेगा मुझे I'm going to go on strike now. मैं अब हड़ताल करने के लिए Right? When Krishna, when Krishna wants me to do some seva, I'm like, no, I'm on strike now. Why I'm not an eternally liberated soul? I got to resent that. कृष्ण से कोई सेवा चाहेंगे मैं हड़ताल करेंगे क्यों मुझे कृष्ण ने नित्य मुक्त जीव क्यों नहीं बनाया क्यों मुझे बद्ध जगत में डाला मुझे तो मैं इसके लायक नहीं हूँ And then my Guru said, well, you could have been a rock. Like, what are you complaining about? ये तुम एक पत्थर हो सकते हो क्या शिकायत कर रहे And हो it's like, that's true. I mean, you had to compare, at least we're not a rock, कभी तैयार है नहीं हो रहा कम से कम हम कोई पत्थर नहीं है Then that'd be really bad, अब ये तो बड़ा बुरा होता है अगर हम पत्थर रहते हैं How about a rock on the moon planet? ऐसा होता है कि आप एक पत्थर हो चंद्रमा लो In Hollywood studio. Or sitting in some holy god's office, that he bought for $10,000, हम जो है किसी Or sitting in this rich, lusty guy's office, कोई जो है अमीर with no hope of ever being moved. व्यक्ति के घर पे जिसने मुझे $10,000 देकर खरीदा है उसके घर पे मुझे I mean, अभी put मैं it in नीले से कमाने से perspective, It's like, life's not that bad, We got a great opportunity. Yeah, let's look on the bright side here, जीवन इतना बुरा भी नहीं है इसका मतलब जो है सही सकारात्मक तरफ देखते हैं ये एक पत्थर बनना भी अच्छा ही है Now you understand? आप समझ रहे हैं So it's not, even now, after so many years, everybody's arguing and, it's unbelievable. इतने सालों के बावजूद भी लोग इस पे बहस कर रहे हैं तो ये अविश्वसनीय है Prabhupada said both things. दो बातें कही हैं कई बार जो बाहरी रूप से अलग अलग They're choosing to listen to these quotes. वो निर्णय कर रहे हैं इन बातों को Even though Prabhupada said in conclusion, nobody falls from Vaikuntha. यहाँ तक प्रभुपाद ने निष्कर्ष में कह दिया है कोई भी वैकुंठ से They're saying that quote is inconvenient truth. और वो उसको जो है सही सत्य नहीं मानते It doesn't fit our narrative. ये हमारे विचारधारा में सही नहीं है So it's like Twitter, it's like if you don't agree with our narrative, we're just going to cancel you. We're going to just excommunicate you. जैसे ट्विटर के जैसा है जैसे आपने कुछ वाक्य डाला और वो उससे सहमत नहीं होंगे तो उसको कैंसिल कर देंगे या बाहर कर देंगे Because we own it, right? We can determine. We own the institution. हम इसके मालिक हैं हम ही निर्धारित So this करेंगे is how we're और हम ये presenting this संस्थान thing. है इसीलिए हम इसको इस तरीके से So if प्रस्तुत you करेंगे agree, then you can be a member. और अगर आप सहमत हैं तो आप हमारे But if you want to सदस्य बन discuss सकते these हैं other things which may be true, but it's inconvenient to the narrative that we're trying to, represent and promote, that's unacceptable. लेकिन अगर आप ऐसे सत्य प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे लिए हम सहन नहीं कर सकते और हम जो प्रचार करना चाहते हैं उसमें हमारे And मदद then नहीं we're करेंगे looking at all the quotes और लेकिन हम and सारे कथनों को understanding the देखना चाहते हैं tattva. और तत्वों को समझना चाहते हैं Then you can understand why Prabhupada is speaking or why the acharyas are speaking, in a particular way according to time, place, circumstance, and different candidate. और तब आप समझ पाएंगे क्योंकि कृष्ण गोपाल आचार्य ने अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के आधार पे अलग अलग तरीके से बातों को प्रस्तुत किया Yeah. So, who has the microphone? माइक्रोफोन किसके पास Because he had this question in doubt. है क्योंकि इनका ये प्रश्न और संदेह था All right, let him hold the microphone. Every time someone holds the microphone, he gets nervous. इनको माइक्रोफोन पकड़ने जब भी कोई और माइक्रोफोन पकड़ता है वो सहमत है Problems, questions, उनका समस्या उनका प्रश्न उठने लगता है doubts. संदेह
Gurudev, if it is not very much needed, this explanation is not very much needed. What's not needed? This explanation about the origin of Jiva, like Prabhupada was not telling the truth. It's needed. It's absolutely needed. But when is someone able to understand it and accept it and not misunderstand it and make it, some excuse why you don't want to surrender and serve Krishna? So it's not that it's not important, it's just when does that candidate need to understand that topic, need to understand that topic? तो पूछ रहे हैं, अगर ये विषय बोल रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति के विषय में, तो मुझे बता रहे हैं ऐसा नहीं है, ये विषय इतने जरूरी नहीं है, ये बात लाजमी है कि कब लोग इतने योग्य हैं तो वो उसको समझ सकें, स्वीकार कर सकें और उसको गलत ना समझ बैठें या फिर उसको एक बहाना की तरह इस्तेमाल करें कि वो भगवान को इस वजह से शरणागत नहीं करेंगे। Jiva Tattva is very critical tattva. जीव तत्व बहुत ही Talking about the creation, the living entities, how Krishna has set up the creation. Krishna says I'm the source of all, material and spiritual worlds. It's part of understanding that tattva. तो ये उत्पत्ति का विषय कृष्ण ने कहा है, वो सारे सृष्टि की उत्पत्ति के कारण उन्होंने सारी सृष्टि की है, तो ये उस सृष्टि की उत्पत्ति का तत्व है। So it's important and we should understand it properly. तो ये महत्वपूर्ण तत्व है और इसे हमें सही तरीके से समझने की जरूरत है। Because I heard Srila Gaur Govind Maharaj, he was speaking that because the GBC, they have chosen that part of explanation, what Prabhupada has given us. So this is a very dangerous time which we are going through. Like that, Srila Gaur Govind Maharaj was speaking in a YouTube. Srila Govinda Swami, his service from Srila Prabhupada is to give the higher teachings according to Prabhupada's books and teachings, so that they don't leave Prabhupada, they don't leave ISKCON. Because eventually they're going to start wondering about these tattvas. So if you can't get someone to understand it and show in Prabhupada's books and teachings that it's there and how to understand it properly, then you think, okay, I got to go to someone else who will explain it to me. So Srila Govinda Swami was selected by Srila Prabhupada, by Krishna, to give the higher teachings in the future when his students would then become more eager and greedy to understand the completeness of these tattvas. And if Prabhupada didn't make that arrangement, how does these books go for the next 10,000 years? So someone has to explain how all of these tattvas are there in Prabhupada's books and teachings, but it just has to be brought out and it just needs further explanation how it's there. So that's a specific service that Srila Govinda Swami got from Srila Prabhupada. तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद से जो निर्देश प्राप्त किया कि कैसे जो सारी ये शिक्षाएं, ऊंची शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद की किताबों में मौजूद हैं, ताकि भविष्य में जब श्रील प्रभुपाद के बाकी शिष्य संस्था के सदस्य धीरे-धीरे जब शुद्ध होने लगे, उन्नत होने लगे और जब उनकी इच्छा बढ़ने लगे, इन सारे तत्वों को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगे, तो ISKCON के भीतर ही कोई ऐसे व्यक्ति मौजूद हो जो इन सारी शिक्षाओं को यहाँ पे उनको दे सके, ताकि उनको ये संस्था ISKCON छोड़ के बाहर जाना ना पड़े और ताकि ISKCON में लोग बने रहे। तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद से ये निर्देश प्राप्त किया। And then Srila Prabhupada's coming at such a late age. He has to travel around the world so many times, 14, 15 times, establishing 108 temples. और इतनी ज़्यादा उम्र में वो निकले थे और पूरे विश्व का भ्रमण करके वो 108 मंदिर का उनको स्थापना करनी थी। He has to train a bunch of completely, unqualified people. और उनको ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना था जो पूरी तरह से अयोग्य व्यक्ति। Translate all of the books. सारे किताबों को अनुवाद करना। Teach them everything. असल में वो सब कुछ सिखाना था उनको। Right, so how Prabhupada is going to explain every single one of these tattvas, which takes hours and hours and hours and hours to really understand it?
तो कैसे श्री प्रभुपाद उन बातों को सभी लोगों को समझा पाते जिसके लिए घंटों घंटों तक का विश्लेषण करना पड़ता है एक एक बात को समझाने, especially with brand new people. और विशेष करके बिल्कुल नए लोगों को। They weren't even reading Prabhupada's books, whatever Srila Prabhupada was already putting out. वो तो श्री प्रभुपाद की किताबें पढ़ भी नहीं पा रहे थे, तो श्री प्रभुपाद जो पहले ही सारी They प्रस्तुत didn't की, even understand the basics. वो तो मूल चीजें भी समझ नहीं पा रहे थे। Prabhupada many times was chastising them and saying, you're not even reading my books and teachings. प्रभुपाद कई बार उनको डांटते थे, कहते थे कि आप लोग मेरी किताबें मेरी शिक्षाएं पढ़ते I'm हैं, writing these books for you. मेरी किताबें आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। Right? So Prabhupada's doing Chaitanya Charitamrita in 2 months because Prabhupada at any time I'm thinking Krishna is just going to take me. क्योंकि प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत 2 महीने में उन्होंने तैयार करवाया, क्योंकि उनको पता था कि कृष्णा किसी भी समय उनको वापस लेकर जा सकते हैं। Prabhupada had already had some, different heart attacks and, different, he knew any moment Krishna could take me. So he was rushing to get as many books translated and out as possible. तो उनको पहले ही 2 दिन का दौरा पड़ चुका था, तो उनको पता था कि कृष्णा किसी भी समय उनको वापस बुला सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सारी चीजों को तैयार किया। That's why he did Krishna book. तो इसीलिए उन्होंने ये Teachings कृष्णा of Lord Kapila. किताब है उसको लिखा। What is it? Teachings of Lord Chaitanya. Because they're like synopsis studies. Because Prabhupada doesn't think I'm going to have time to write all of these books. ये सारे उन्होंने शिक्षाएं दे दी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे बाकी सारी चीजों को विवरण देने का समय नहीं मिलेगा। And in many purports, Prabhupada put one sentence or no purport, right? It doesn't mean that Prabhupada doesn't understand all of those things. He's just giving you the essence so that it's there as a law book. But then it needs to be explained further. तो श्रील प्रभुपाद ने कई सारी जगहों पे पूरा तात्पर्य नहीं दिया, या कई जगहों पे तो उन्होंने श्लोक का तात्पर्य तक नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं थे उसका तात्पर्य, बल्कि उन्होंने वो सारी चीजें वहां डाल दी, लेकिन उसको और ज्यादा आगे विस्तार से लोगों को समझाने की जरूरत है। वो सारी चीजें वहां मौजूद हैं। So it's like a Srila Prabhupada put like, one sentence or 2 sentences. So for the next 10,000 years, we can't say anything beyond those 2 sentences? तो श्रील प्रभुपाद ने कई जगह पे केवल एक वाक्य या 2 वाक्य लिख दिया, और ये किताब आगे 10,000 सालों तक पढ़ने वाली है, तो क्या हम 10,000 सालों तक केवल वही 2 वाक्य तक ही सीमित रहेंगे? And you have all Shirda Swami and all these previous acharyas, like Siddhanta Saraswati Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, right? Jiva Goswami, you have all of these great personalities who have spoken exactly on all of those tattvas, right? So that all can be, if it's properly understood, you can actually further explain beyond just 1 or 2 sentences Prabhupada may have put in some particular translation, after some translation. और बहुत सारे टिप्पणी और भी हैं, श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, इतने सारे आचार्य ने बहुत सारे टिप्पणी और टीकाएं की हैं सारे विषयों के ऊपर। और अगर इनको कोई सही तरीके से समझ पाता है तो उन 2 वाक्यों जो प्रभुपाद ने दिए उसके अलावा भी और आगे विश्लेषण किया जा सकता है, यानी कि आपको और ज्यादा आगे विस्तार So से Prabhupada विश्लेषण करने doesn't की make an जरूरत है। arrangement within his own institution, then they're going to all go to other mats, other places. तो प्रभुपाद अगर अपनी ही संस्था के अंदर व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो उन्हें दूसरे मठ या दूसरे संस्थाओं में जाने की जरूरत पड़ेगी। And because in many ways it's hidden, these people say, oh, these are just ABCs. When you want to get serious and you want higher teachings, you have to leave ISKCON. और कई बार लोग ये कहते हैं कि प्रभुपाद ने केवल ABC सिखाया है, और अगर आपको और ऊंची शिक्षा चाहिए तो आपको ISKCON छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। So Srila Govinda Swami said, this used to give him so much pain when we hear this type of criticism that his guru is only giving ABCs. Everything is there. तो श्रील गौरव समाज के कहते हैं मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने केवल ABC दिया है, वहाँ पे सारे कुछ चीजें मौजूद हैं उनकी किताबों में। Does that help you? क्या आपकी थोड़ी मदद हुई? When I was initially when I joined the Association of Devotees, not the temple, so I used to go to a youth center, and in the very first class when I heard the lecture of that devotee, so I questioned this question actually, that how it all began, means how we came here like this, How what? how we came in this material world. Right.
Yeah. So that actually I. You guys are all smarter than me. I was like, I'm in such trouble, I can't even try to figure that out. You know what I mean? I'm just trying to get out of trouble. I don't even care how I got there. आप लोग इतने बुद्धिमान You guys are more philosophical than I was. वो बता रहे हैं कि जब मैं शुरुआत में आया था तो मैं जब समय में आया था तो मैं ये सवाल पूछता था कि ये जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मेरे सवाल हुआ करता था। मुझे बता रहे हैं आप लोग इतने बुद्धिमान हो गए। मैं जब शुरू में आया था मैं तो सोचता कैसे मैं मुसीबत से इतनी बड़ी मुसीबत में इसी तरह मैं मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। I was trying to figure out how did I get into the trouble I'm in? How do I get out of this trouble? I had enough to worry about, you know? मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को मैं सोच रहा था कि इस मुसीबत से मैं निकलूं कैसे। मेरे पास अभी What बहुत was चीजें the हैं origin चिंता of करने my की। soul? And I was like, I had no time. I was doing crisis management, you know? मेरी आत्मा कहाँ से हुई? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में था, मैं किसी तरह अपनी समस्या का समाधान करूं, उसी में मुझे समय पूरा खत्म हो जाता I didn't get, philosophical till much later. बाद में मैं थोड़ा सा शांति हो गया मैंने सोचा। Then once I was finally there and sitting there, I was like, oh yeah, what does that actually mean, you know? मैं वहाँ पहुँचा था, मैं बैठा था, तब मैंने सोचना शुरू किया ये सब चीजों का मतलब क्या है। Before I was just trying to survive somehow, you know? उससे पहले तो मैं किसी तरह से जिंदा रहने का प्रयास Then then I left that question actually. I didn't got the answer. You love that place? Question. The question means I didn't give much importance to that question, and then I moved on, and then But the again. question was still lingering. Not कह रहे very. कि मैंने उस प्रश्न में बात करना महत्वपूर्ण नहीं दिया, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्रश्न आपको थोड़ी खटक रही थी। Although it was not creating any obstacle, that question was not obstacle. Although my anarthas were obstacle, Yeah. but that question was not obstacle. But still, in ashram also some devotees were discussing these things. It's one So of these topics, right, in the ashram. Guru Tattva, Jiva Tattva, who's a guru? I'm a guru, you're a guru, she's a guru. Right? and then again I started researching on internet. And what? Again I started researching on internet. You started researching on the internet. Uh-oh. Again. Again. So Those lurking philosophical questions are still there. then तो प्रभु बता रहे हैं कि लेकिन फिर बाद में आश्रम में भक्तों के बीच में चर्चा शुरू हो जाती है जीव तत्व के बारे में, जीव की उत्पत्ति पर। फिर गुरुदेव बता रहे हैं ये हमेशा चर्चा में रहता है, जीव तत्व कौन है, गुरु क्या है, गुरु क्या वो है, गुरु ये चर्चा हमेशा लगी रहती है। तो फिर प्रभु बता रहे हैं इसके बाद फिर और खोजबीन करना शुरू किया कि That's good that you have these questions. कि आपका ये सवाल है And then Krishna knows this is your question. और कृष्ण को पता है आपका ये सवाल है। Right? So because you had sincere question, Krishna has to answer that और question. क्योंकि आपका सवाल एक निष्ठ है तो कृष्ण के सवाल का उत्तर देंगे। But who will answer the question where you actually make sense? It's according to Guru Sadhana Shastra, and somehow or other, Krishna gives you intelligence and faith to just accept that answer, even if it's a simple answer. कौन हो सकता है वो सही व्यक्ति जो आपको बिल्कुल ऐसा उत्तर दे जिसका बिल्कुल सही अर्थ हो, गुरु साधु शास्त्र के आधार पे हो सकता है वो बहुत सरल उत्तर हो लेकिन वो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर दे उस उत्तर पे। Then in research I got that even GBC is not accepting the conclusion of what our acharyas are saying. Then I got even more inquisitive about it. What's wrong in this institution? That's because of this asatsanga. Because I didn't think about it till I was in Vrindavan, and one devotee was writing a book like not even the leaves fall. Right? That book is banned. That was banned. So as soon as it was banned, I was like, I gotta read that book. I wouldn't even read it until they said it was banned. I'm like, what's in that book? It like backfired, you know? Then everyone started looking to the book, otherwise why they banned it? There must be something in there, right? And then we all became curious. Then it became like this big topic. Before that we were like, we never even thought about it. तो जब उन्होंने बताया कि मैंने जब देखना शुरू किया कि जीबीसी भी इन विषयों पे सहमत नहीं, आचार्य ने जो बातें करी है जीव की उत्पत्ति के बारे में, तब मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी, ये लोग भी क्यों सहमत नहीं है, ऐसा कौन सा विषय है ये? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यही चीज जो है
जिज्ञासा का आगे बढ़ा थी। मैंने भी कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं था जब तक मैं वृंदावन नहीं पहुंचा। वृंदावन जब मैंने पहुंचा तो वहां मुझे पता चला कि एक पत्ता भी पेड़ से नहीं गिरता, ऐसी किताब है और उस किताब को बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हमारे मन में और ज्यादा जिज्ञासा आ गई कि इस किताब को प्रतिबंध क्यों किया गया, तब ये और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया लोगों के बीच। Then I was about to get a youth preaching training. A new what? Youth preaching training. I was Youth preaching trainer? yeah, because I was supposed to do youth preaching in ISKCON. So my counselor, he wanted me to get trained as a youth preacher from Pune temple. I just escaped out of that. In Shalanda, we have to escape out of that. We were almost captured in that place. बाद में मेरे जो काउंसलर थे वो मुझे यूथ प्रचारक बनाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि मैं पुणे जाके वहाँ से ट्रेनिंग लूँ पुणे के मंदिर से, क्योंकि हमें ये सब चीजें प्रचार करनी थी। तो फिर बताया पुणे ऐसी जगह है, वहाँ से हम बच के निकले और Escape from Alcatraz, you know. Escape from Pune. So I got a mail because I registered myself for the course of training course. So I got some mails from Pune, and they were You got some what? Email reply. Oh. Email reply. some schedule, some dates, some fees details, everything. These kind of mails, and Inviting you to come. and the rules and regulations also. Acha. That what you can discuss here and what you cannot discuss. Wow. You didn't even get there yet. They're already telling you, you can think like this, but you can't think like that. तो वो बता रहे हैं कि वहाँ फिर मुझे वहाँ से बहुत सारे मेल्स मिले जिसमें बताया गया जो मेरा कोर्स के बारे में बहुत तो You can ask this question, you can't answer that, you can't answer this question. और वहाँ पे हमें पहले ही सारे नियम कानून बताए गए कि आप वहाँ बातचीत कर सकते हैं, क्या सवाल आप पूछ सकते हैं और क्या सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। And in that mail, in the 7th point, it was written, it is in front of me. Kindly follow the Vaishnava etiquettes given below during your stay here. To not indulge in prajalpa is a Vaishnava principle. Any kind of grammatical. Science papers or We at ISKCON Pune try our level best I'm getting the mood, you know. Understand the mood. क्या भाव आए हैं मैं उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। We at ISKCON Pune try our level best to conform to this standard. We conform. You conform. वो कह रहे हैं कि पुणे में आप जो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और इसको पुष्टिकरण करके ये फॉलो करेंगे। We would request you not to indulge And then in they give the class and they're like this. They give the class like after they send this out, right? It's like, you will conform. And then they give the class like, all Get real, man. Get real. You will conform. You will ask the questions we tell you to ask. Hear the answers that you need to hear. We are the mind police. We will introduce social credit score. We'll watch how many rounds of japa you chanted to them. What time is important in the morning? Right? They'll put something on your cell phone, you know? Yes. We would request you not to indulge in discussions about Gopi Bhav, fall from Vaikuntha. Gopi what? Gopi Bhav. Gopi Bhav? The gurus are in charge of the Gopi Bhav. They're in charge of this Hajia Gopi Bhav sect. Don't talk about our
guru doing this sahaja. बताया गया है कि एक नियम है कि वहाँ यहाँ कोई भी गोपी भाव के बारे में We are not advanced enough. Only they will talk about it. गुरुदेव बता रहे हैं कि जो उनके गुरु हैं वो इस गोपी If they don't talk about चार्ज है it, don't you talk about it. और वही केवल इसके बारे में बात कर सकते हैं, आप लोग इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। I'm so bad, you know. मैं बहुत बुरा हूँ। मेरे क्षमा I'm not bad. क्या मैं बुरा हूँ? This is too bad. मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। Very sarcastic. मैं बहुत व्यंग्य करता हूँ। Gopi Bhav, fall from Vaikuntha, Ritvik issue, Guru issue, and poison issue, etc. And what? Guru issue and then poison issue. The poison issue. Those are all loaded topics. कह रहे हैं इन चीजों बात नहीं कर सकते। गोपी भाव जीव का पतन कैसे हुआ? Guru issue. And when you join the temple, like they check all your computers, all of your cell phone. Have you ever sent an email to anybody asking about this topic? Do like a full, total analysis of who you are, what you are. तो वो पूरा आपका फोन कंप्यूटर लेके सारा उसमें चेक करते हैं, आपने किसी भी कोई मेल किसी को भेजा हो इन विषयों के ऊपर जानने के लिए पूरा सारे चीजों जानने के लिए प्रयास करते हैं। Can you see me joining this counselor system क्या आप कल्पना कर सकते हैं and going through the bridge coaching psychology program? Do you really think how long do you think I would have lasted there? तो मैं इस काउंसलिंग व्यवस्था से जुड़ूंगा, क्या लगता है Sham, would I have done good there in that training program? क्या उस प्रशिक्षण कार्यक्रम Simple में guy like me, you just follow the authorities, right? मेरे जैसा सरल आदमी जो केवल I would have fit right in there. मैं बिल्कुल सही उनके नियमों में बैठ पाऊंगा। And these all the topics are Prajalpa. They're what? All those They are topics considered listed, they're all Prajalpa. They are Prajalpa. Why are they preaching this Prajalpa? That's the question. Why are they creating the topics which they're then saying is Prajalpa? तो वो इन चर्चाओं को प्रजल्प कह रहे हैं, तो क्यों वो ऐसे विषयों को चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं और इनको प्रजल्प कह रहे हैं? They're creating the problem, but if you talk about the problem, that's Prajalpa. और ये समस्या यही बना रहे हैं, और जब इस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे ये प्रजल्प कर रहे हैं। So all their misconception, तो ये सारी right, all their deviation of preaching opposite thing, जो बिल्कुल उल्टा has brought this doubt and question in everyone's mind. तो ये संदेह और प्रश्न सभी लोगों के मन में लेकर आए। But from our side, we cannot try to find out what is what. लेकिन हमारी तरफ से हम ये जानने का भी प्रयास नहीं कर This is सकते like toxic. ऐसे कोई जहर हम लेकर आए। Even if some simple devotee who is not even aware of these topics, jiva issue, but if they will write like this, then he will think that these are very important things. Let's inquire about it. Be inquisitive about this. As soon as you find out that people are like that, you'll be like that. Just like with this book, right? It got banned. I didn't even ever think about that topic. तो जैसे ये किताब है इस पे प्रतिबंध डाल दिया गया था। प्रतिबंध डालने से पहले मैंने इन विषयों के बारे में कभी सोचा नहीं। उसी तरह ये लोग इन बातों पे बात करने के लिए बंद करने को कह रहे हैं, तभी लोगों की जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ रही है इन बातों की चर्चा करने। And all of a sudden, they're like throwing out these senior devotees who wrote the book. और अचानक से ये उन वरिष्ठ भक्तों को बाहर निकालने का प्रयास कर And रहे they हैं had some big positions within the institution. और इन लोगों ने एक बड़ा स्थान ग्रहण किया है संस्था के अंदर। And everyone, for years, everyone's respecting and listening to these people. And all of a sudden, they're thrown out, and then they wrote some book. It's like I was curious, like what were they writing that got them thrown out? और अचानक से उन्होंने कोई किताब लिखी, इतने सालों तक संस्था में सेवा करने के बाद अचानक से उनको संस्था से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत दिलचस्प सवाल जिज्ञासा लेकर आता है, क्या इस किताब में थी जिसमें को बाहर निकाल दिया? When I joined ISKCON just after all the gurus fell down. मैं इस पर जुड़ा था तुरंत उसी के बाद जब सारे गुरुओं का पतन हो रहा था। And then all of these deviations from New Vrindavan and Radhanath Swami's group and Kirtanananda
before he went to jail. And then we had the Ritvik, that came out. So I was like, I would just get all these issues, and I would study every side of it to try to understand what is it. तो जब मैं शुरुआत में Why is this some controversy? Why is this some deviation, right? My mood was just, why not become as much informed as possible so that you can know and then be able to explain it to other people. तो जब मैं आया शुरुआत में तो न्यू वृंदावन और ऐसी सारी जगहों से उस समय ये विमुखता उठनी शुरू हुई राधानाथ स्वामी और फिर कीर्तनानंद उनके जेल जाने से पहले और ये सारे विषय जब उठने शुरू हुए ये सारी विमुखताएं जो विषय उठना शुरू हुआ तो मैंने उस समय ये सारे विषयों पर खोजबीन करना शुरू किया ताकि मैं जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकूं ताकि इन लोगों को बाकी जा सके बताई जा सके. They can't explain it. Their gurus created it, and they don't understand it, and neither they can explain it, and if you explain it properly, it exposes the gurus. So how can they possibly get into that conversation? तो इन्होंने इन गुरु ने इस विषय को निकाला उसको समझते नहीं हैं और इसको विवरण नहीं दे सकते हैं और उन शिष्यों और उनके गुरुओं ने ये सारे विषय को शुरू किया और वो उसको सही तरीके से विवरण नहीं दे पाते विश्लेषण नहीं कर पाते. They're caught. वो पकड़े जा चुके हैं. Even it is very interesting that they are writing Guru issue also in the list of Prajalpa. Guru issue? Yeah. Guru Tattva. It's inconceivable. यहाँ तक कि वो गुरु इशू के ऊपर बातचीत कर रहे They are telling not to discuss about this. Let's इसके बारे में बातचीत discuss करेंगे. endlessly an inconceivable topic that nobody really knows anything about. How's that? Spend your time speculating and talking about inconceivable topic which is not supposed to be talked about. और वो ऐसे विषयों पर बातचीत करना चाहते हैं जिसको अचिंत्य बातें हैं और असीमित रूप से हम केवल उस पर बस चर्चा ही कर सकते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगी और ऐसे अचिंत्य बातों पे बस केवल चर्चा करके ही रहना चाहते So हैं. don't think, तो बिल्कुल आप सोचिए मत. and even if you think about it, don't discuss it with anybody. हो सकता है आप सोचने भी लगे लेकिन इसकी आप चर्चा नहीं कर And सकते. don't listen to anybody who wants to discuss it with you. और उन लोगों की बात मत सुनिए जो ये विषयों And पर whatever चर्चा करना you चाहते हैं. need to know, और जो भी that's आपको what we'll जानने tell की you. जरूरत है हम आपको बताएंगे. And whatever we present to you, that's the only thing you should know. और जो हम आपको प्रस्तुत करेंगे बस आपको वही. And once you know that, you just repeat that endlessly. और जब एक बार आप उसको जान जाते हैं आप बस उसी को दोहराइए बिना रुके And never deviate from that. और कभी भी उससे भटकिए. Then you can stay in this temple तब आप इस मंदिर में रहें and we'll feed you. और हम आपको खाना खिलाएंगे And we'll give you a chance to make some money. और हम आपको देंगे थोड़ा पैसा कमाना. Have I misunderstood something? क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? He better ask a question. He's gonna have a hemorrhage from his brain. He's gonna have aneurysm. His brain is ready to blow up, man. इसका ब्रेन हैंडल हो जाएगा ये सवाल आप पूछेंगे तो. I got lot of many questions while you were discussing those things. Isn't it funny? He gets everything answered, then he gets the mic and he's like, well, I already have the mic and everything's already been answered, but. और जब इनके हाथ में माइक्रोफोन आता है तो वहाँ तक ये चर्चा हो चुकी है. And he feels like a blind, so he's supposed to say something, you know? Look, everything was answered, man. Give the mic to that guy. We keep trying. It's not like we're not trying. But like everything's getting answered. तो आप ऐसा नहीं प्रयास किया करें लेकिन सारा Then when he gets the mic back, he's like, जब इनके हाथ में माइक्रोफोन वापस आ रहा है Some questions are there still remain. That's what I wanted to ask. And What question? you Are you told, just making stuff up now? no, the question got immediately when you spoke the thing. That you said that some were born in Tatasthan, some were already Nitya Siddha, they were already they were
Have you been preaching to him? Yes, yes. के बारे में बात कर रहे थे और एक प्रश्न आया था बता रहे कि आप इनको प्रचार करते हैं ये थोड़ा प्रचार करता है Who contaminated you? So what is he asking? क्या पूछ रहे हैं आप So the, You understand? He didn't finish his question. He didn't finish the question. What are you going to be here till midnight? Oh my God. Yeah, take my other round. सवाल ऐसा है कि अगर सब Stop pulling teeth, सवाल you ऐसा है कि know? अगर सब लोग एक तरीके से कृष्ण से रिलेटेड है तो क्या सबका जो कृष्ण के साथ का रिलेशनशिप है क्या सेम लेवल पे क्या कुछ ना कुछ डिफरेंस है क्योंकि सब तटस्थ में आधे हैं कुछ ऑलरेडी लिबरेटेड है तो सबके साथ अलग रिलेशन है सबके साथ डिफरेंट है कि उसका डिग्री है So he's asking that there are different living entities. Some are in Tatastha, and some are liberated soul, eternal liberated soul. So these Tatastha risen souls, they all have the same eternal loving relationship with Krishna. All have same eternal loving relationship with Krishna, or like they have like different kind of stages of loving relationship with Are you Krishna. talking about spiritual platform? Yeah. Every soul is designed and has the potential to reach who and what you were designed for. तो अगर आप आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे थे कि जितने भी जीवात्माएं हैं वो मुक्त जीव और बद्ध जीव सभी में से सभी जीवों का अलग अलग स्तर का नित्य प्रेम में संबंध है भगवान के साथ या एक अलग अलग है तो मैंने उत्तर दिया कि अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं तो सभी को जिस चीज के लिए तैयार किया गया है जिस जीवात्माओं को उस स्तर तक पहुंचने के लिए सबका अलग अलग स्तर है धीरे-धीरे उस स्तर तक पहुंच सकते हैं And if our destination is Goloka Vrindavan, Mahaprabhu says that that's the destination in one of the four rasas. और महाप्रभु ने गोलोक वृंदावन में 4 तरह के रस में हमारा लक्ष्य दिया But we need a lot of purification to come to soul platform, liberated platform, then automatically that will be revealed when you're completely liberated from material bodily platform. लेकिन हमको बहुत शुद्धिकरण आने की जरूरत है आत्मा के स्तर में आने की जरूरत है तब अपने आप ही आपका मुक्त स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा So until then, just think, because everybody's always Das, Krishna Das, Krishna लेकिन Das. उससे पहले तक आप बस ये सोचिए कि सभी लोग कृष्ण के दास हैं No matter where you end up, everybody's Das, Das. तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ So just पहुंचेंगे सभी कृष्ण के दास practice that दासी हैं mood. तो उसी भाव का बनाएंगे So why everybody is running after Manjari Bhav only? For what? Manjari. Everybody wants to become Manjari. Everybody wants to be a hero. सभी मंजरी भाव में क्यों जाना चाहते हैं इसके पीछे Because it is said that सभी हीरो बनना चाहते हैं Before, they wanted to be God. पहले Right? And then once they heard Krishna say that higher than me, I am the Das of that Srimati Radharani and the gopis, then they said, okay, there's a higher position. They went from wanting to be God to wanting to be the guru of God. तो जब कृष्ण ने ये बोला कि गोपियाँ मैं गोपियों का भी दास बनना चाहता हूँ मेरी गुरु गुरु भगवान से भी ऊपर कोई है तो भगवान के गुरु हैं These are very ambitious people. ये बहुत ही उद्देश्य के पीछे भागते हैं they think that the rasa can be cultivated. They can be what? The rasa can be cultivated. Like if we want to cultivate conjugal love. Look, if they're concocting now, then they think you can concoct later. Right? This is eternally concocted. Because it can be constantly concocted and changed, right? तो ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग सोचते हैं ये भाव को निर्माण कर सकते हैं और भगवान के बीच में तो गुरुदेव बता रहे हैं ये सोच रहे हैं अभी ये लोग नहीं निर्माण इतनी सारी चीजें कर रहे हैं पहले वो सोच रहे हैं आगे भी ये चलता रहेगा वहां पहुंचने के बाद भी ये भाव को निर्माण ही होगा I think that's why Prabhupada this stopped this Gopi Bhav club. He stopped it. Stopped this Gopi Bhav club.
Stopped it? He says, I think that's why Srila Prabhupada stopped the Gopi Bhav Club in LA. Everywhere they're always trying to do like this. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने गोपी भाव का बंद करवाया लॉस एंजल्स में। उन्होंने बता रहे हैं कि सभी जगह उन्होंने ये करने का प्रयास किया। Because they don't want, they're like Ravana. They just want to just build their own way to go. क्योंकि ये रावण के जैसे हैं, जैसे वो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। The easy, cheap way, you don't have to pay the price, you don't have to purify yourself, you don't have to surrender to anyone, you don't have to qualify yourself. You just make it up as you go. तो आसान सरल रास्ता, आपको मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है, शुद्धिकरण से जाने की जरूरत नहीं है, कठिनाइयों से गुजरने की जरूरत नहीं है, बस आसान सस्ता रास्ता निकाल के पहुंच जाने का। That's the problem Prabhupada said about especially Western people. You know, they think they're very smart, and they always want to just manufacture and change and concoct everything. They don't want to go according to the eternal science. और तुम विदेशी लोगों की यही समस्या है, खुद को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हो, हमेशा चीजों को बदलते रहना चाहते हो, वो समझते हो इस नित्य विज्ञान को तुम बदल सकते हो। They think they know better than Krishna, better than Krishna Parampara. वो सोचते हैं वो कृष्ण परंपरा से बेहतर है। So they'll just make up their own way. वो खुद का रास्ता तैयार करते हैं। Is everybody designed to be in Golok Vrindavan, or some are designed to be in? If you're in Mahaprabhu, if you surrender in Mahaprabhu's, movement, and you go accordingly in a proper way under guidance of Mahaprabhu's devotee, then the opportunity is one of 4 rasas in Goloka Vrindavan. सभी जीवों को गोलोक वृंदावन जाते हैं तो बता रहे हैं अगर आप महाप्रभु के आंदोलन में हैं और महाप्रभु के भक्तों को आप सम्मानित करते हैं और उनके बताए गए निर्देशों को पालन करना स्वीकार करते हैं तब आपको उस गोलोक वृंदावन जाना। They don't have a dashara. के पास आदर्श They don't have a bona fide guru. प्रमाणिक गुरु नहीं है, There's no sambandha gyan. कोई संबंध ज्ञान नहीं है। What to speak of Abhideya and Prayojana. अभिधेय और प्रयोजन Just skipping all of that इन सारी चीजों को and just reading some rasa shastras. केवल रस And just शास्त्र saying को पढ़ के we're already advanced devotees. कह रहे हैं हम पहले से ही उन्नत भक्त हो चुके हैं। And because we have some gyan and we can talk about these books, then therefore you should worship us as advanced devotees. क्योंकि हमारे पास ये ज्ञान है, हमने ये सारी किताब पढ़ी है, इसलिए आप सभी लोग हमारी पूजा कीजिए। And we're gopis in separation. We're doing raganuga. It's all chilling. So the jivas in Vaikuntha can also elevate themselves for Golok Vrindavan. Those who are serving Narayan. If you're a follower of Mahaprabhu and you're in Mahaprabhu's parampara and you do everything nicely, properly, perfectly, and you get all of that mercy, you'll go to Goloka Vrindavan in one of those 4 rasas. That's all you should know. Simple. Keep it simple. उन लोगों में रुचि है या वो भी गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। ये बता रहे हैं अगर आप महाप्रभु की आंदोलन में परम चलते हैं, अगर आप यहाँ शरणागत करते हैं, वापस को स्वीकार करते हैं, तो आपको 4 रसों में गोलोक वृंदावन जाने का मौका मिल सकता है। आपको अभी वर्तमान में ये जानने की That's what we're being offered. और ये हमारे सामने प्रस्ताव रखा गया। So that's what we have to stay focused on, and this is what we have to go to. What we end up, that's up to Guru and Krishna. तो इसी में हमें ध्यान लगाने की जरूरत है, इसी में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और क्या हमें Automatically will that be revealed from their side. और अपने आप ही तत्व उनके तरफ से प्रकाशित कर दिए। So we should just do as much as we can to please our spiritual master, to please Guru and Krishna, and then whatever we deserve, whatever they say, whatever seva they give, whatever place they send you, then you just accept that. और हमें बस यही प्रयास करना चाहिए कैसे हम गुरु और कृष्ण को सुखी कर सके अपने सेवा के माध्यम से जो भी स्थान वो हमें देंगे हम स्वीकार करेंगे। I am asking these questions because I was in association with a devotee who is a follower of Narayan Maharaj. तो प्रभु बता रहे हैं मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे भक्तों के संग में था वो भक्त नारायण महाराज के शिष्य थे। So what he was trying to preach me that we are Rupa Nugas, and because Rupa. This is all
unauthorized. It's unauthorized, so it doesn't matter whether they preach on you. तो ऊपर पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो लोग बात कर रहे थे क्योंकि हम गुरबान हुआ है उनसे बता रहे ये सब गैर आधिकारिक बातें हैं जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बातें कर रहे हैं सारा गैर आधिकारिक बातें हैं You just follow Prabhupada's books and teaching केवल गुरबान की किताबों और शिक्षाओं को पालन and keep your faith there. और अपनी श्रद्धा वहीं पे रखिए Because after this Rup Goswami has composed Nectar of Devotion and then Ujjwal Nilmani, these books. But Ujjwal Nilmani is about the conjugal love. So that book is for only those devotees who are after conjugal like this. Look, you know, That's what I was getting from that devotee actually. look, the highest thing, even Krishna says higher than even I submit myself to Srimati Radharani. Okay, so the whole system from Srimati Radharani as guru of even Krishna, right? The highest rasa, the highest relationships, you know, everything is being described there. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि जैसे अधिकार स्थापित शुद्ध हो ये सब पूछने लेना लेकिन उसके बाद में कि ये सारी चीजों में इसके बारे में विवरण दिया गया है जो कि युगल प्रेम को बताया गया है तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी वो भी कृष्ण के गुरु के रूप में और ये सारे जो विषयों की चर्चा यहाँ पर इन सारे ग्रंथों में की गई है So we should understand the whole, you know, what is the goal, what are the opportunities, what is the process, and how do you find success in that process. तो इन सारी प्रक्रिया में हमें देखने की जरूरत है हमारा लक्ष्य क्या है और ये प्रक्रिया क्या है इस लक्ष्य तक पहुंचने की और हम इस प्रक्रिया में इस जगह तक पहुंच पाएं The problem with this is they're thinking that they can, by focusing on that they will just manufacture everybody to believe that this is what is your destination. और वो ऐसा सोचते हैं कि लोग इस विषय में हम जितनी ज़्यादा चर्चा करेंगे लोगों का ध्यान इस विषय में इतना ज़्यादा आएगा तो हम लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे कि आपका लक्ष्य असल में ये होना चाहिए So instead of going through the process how to qualify yourself for that, no, just immediately jump to that and start to practice that Raganuga. तो वो ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को योग्य बना सकते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से कि कैसे आप उस स्तर पर लक्ष्य तक पहुंच सकें उसके बजाय वो सीधे लक्ष्य पे कूद के रागानुगा स्तर पर भक्ति आगार में सकते हैं But first you have to do Vaidhi Bhakti, you have to go through this Bhajana Kriya, you have to get through a Nartya Nivritti, you have to come to Nishta platform. That's why it says if you try to bypass the Goswami's instructions, it says you will be disturbed and you will create a disturbance in the order. So they are just bypassing everything and just trying to jump past Nishta platform into some Baba Ruchi platform without going through the actual process of purification and qualification that's required to act on that platform. The whole thing is unauthorized. It's not scientific. तो इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को त्याग करके भजन के लगा के भजन से भजन के कैसे निष्ठा स्तर में अपने आप को योग्य बनाया जा सकता है तो वो इसलिए कहा जाता है अगर आप गोस्वामियों ने जो पद्धति की है उसको त्याग कर उसको छोड़ के सीधे सीधे लक्ष्य पे कूदने का प्रयास करेंगे तो आप खुद को परेशान करेंगे और बाकी लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे Prabhupada said, we are Goshtiyanandis, we are preachers. We're not Bhajananandis. Goshtiyanandi Mahaprabhu's movement is preaching movement. So if you are acting and serving Mahaprabhu, you please Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotees, they'll reward you accordingly, automatically. But what they do is they give up the preaching. Right? So that's not pleasing to Mahaprabhu's, parampara. And then they're artificially trying to act on a platform that's beyond Ananta Nivritti, and they don't even
You didn't even go to the process properly. You didn't qualify yourself. और वो उस स्तर पे जाके बनावटी तरीके से व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं जो अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है तो ऐसा उन्होंने स्वयं को योग्यता नहीं बनाया उस जगह तक पहुंचने के लिए What they're doing is they're trying to say that Raganuga Bhakti is the purifying process that gets you through Anatta Nivritti. That's what they're doing. वो क्या कर रहे हैं ये प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं ये रागानुग भक्ति है ये इस शुद्धिकरण का माध्यम है जिसके माध्यम से आप अनर्थ निवृत्ति से गुजर के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं But unless you're on the soul platform, on a Nishta platform, Brahma Bhuta Prasanatma platform, transcendental platform, how can you practice Raganuga? When you still have your mind, your false ego, your misconceptions, all the anarthas, all of the lust, all of the philosophical misconception, right? How are you possibly going to practice Raganuga Bhakti on that material platform? It's not possible. अगर आप आत्मा के स्तर पे नहीं है निष्ठा के स्तर पे नहीं है ब्रह्मभूता के स्तर पे नहीं है तो कैसे आप इस रागानुग स्तर की भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं जब आप मिथ्या अहंकार के स्तर पे इतने सारे तत्व भ्रम है अनर्थों के साथ है काम के साथ है क्रोध के साथ इतने सारे के बीच में कैसे आप आत्मा स्तर पे रागानुग भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं ये कैसे संभव है You can't say, okay, we've decided that Raganuga Bhakti is the new, Raganuga Bhakti is the new Vaidhi Bhakti. आप ये नहीं कह सकते कि रागानुग भक्ति ये नहीं वैदिक भक्ति है So we'll short circuit the purification process through Anatta Nivritti and just plug you right into being a manjari in a mood of separation. And your complete bodily Tamagun and Rajagun platform. How are you possibly going to practice Raganuga Bhakti under the modes of Rajagun and Tamagun? You tell me that. ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो रागानुग भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं तमोगुण और रजोगुण में और ये शॉर्ट सर्किट बना के कि वो भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति से इसको सीधा जंप करके वो सीधा रागानुग भक्ति का अभ्यास करना चाहते हैं One of my godbrothers, he asked Srila Govinda Swami, my Gurudev, said, Gurudev, can I read the Rasa Shastras by the Goswamis? तो मेरे एक गुरु भाई ने मुझसे पूछा कि क्या और उनसे महाराज से कि क्या मैं रसा शास्त्र पढ़ सकता हूँ जो गोस्वामी ने लिखा है And my Gurudev said, are you free from sex life? कि आप यौन संबंध से मुक्त हो चुके हैं Finished. You're on a bodily platform, you're still thinking you're a man, and then all of a sudden you're a man, and now all of a sudden you're acting like a gopi in separation. I mean, the whole thing is a scam. The whole thing is it's offensive actually. So if you have material desire for sex gratification and sex life, how can you possibly try to imagine what are these relationships between Krishna and his devotees in the fourth dimensional Shuddha Sattva transcendental platform? You'll definitely misunderstand and you'll make offense. अगर आपके अंदर भौतिक इच्छा है यौन संबंध बनाने की इच्छा है तो कैसे आप कृष्णा के भक्तों के बीच का संबंध ये गोपी स्तर का संबंध ये सारी चीजों को कैसे आप गभीर स्तर पे कैसे आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं And what they all do is they give up the preaching mission. उन्होंने क्या किया उन्होंने इस प्रचार को त्याग कर दिया That's not Prabhupada's instructions. ये सब प्रभुपाद के निर्देश नहीं Prabhupada left Vrindavan when he was, at the end, how old was Prabhupada? 70 years. 67? 69. 69? 90. So when he left Vrindavan? Yeah, 1896 and 1964. Yeah, They 69. left his body in 1977, right? So 67 to 77? 70 years old. Probably Almost. 70. 70, yeah. Probably. 70. I think so. So Srila Prabhupada left Vrindavan to go preach Mahaprabhu's message in the Western country. These guys are like, 20, 30, 40 years old, they're giving up all preaching, and then they think they're going to just practice Raganuga Bhakti. तो श्री प्रभुपाद ने 70 साल पूर्व वृंदावन छोड़ प्रचार करने के लिए
और ये जो लड़के हैं 23-24 साल के उन्होंने सारा प्रचार छोड़ के दिखावा बनावटी तरीके से दिखाने का प्रयास करें कि गोपी है वृंदावन वीरा। They don't even have a guru. बस वो They didn't even get the first installment of Krishna's mercy. कृष्ण की कृपा की पहली किस्त भी नहीं पहुंची। So there is no sambandha jnana. तो उनका कोई संबंध ज्ञान ही नहीं है। So Krishna has not even accepted you. कृष्ण ने हमें उनको स्वीकार नहीं। But you're having a relationship with Krishna in the mood of a gopi. लेकिन आपने कृष्ण के साथ संबंध बना लिया गोपी के भाव में। And Krishna didn't even accept you yet. और कृष्ण ने आपको संबंध भी नहीं दिया। Think about that one. थोड़ा सोचिए इसके बारे में। Does that make any sense? इसका कोई भी मतलब It's all foolishness. सब बेवकूफी मूर्खता। Then I shared him a lot of quotations, the conversations of Prabhupada, where Prabhupada is criticizing the Gaudiya Math, that they are asar, they are useless, they have stopped the preaching work, and they have a small temple and a guru, and sometimes the guru is being changed 3 times in a year. Right. Everything, and Prabhupada is writing in the purport of Chaitanya Charitamrita also. I shared everything, and Prabhupada is speaking like he is a black snake. Very strong words also Prabhupada is speaking against them, the Gaudiya Math people. This is Pujaba, man. I'm speaking Pujaba. It's like any truth they don't want to hear, you just call it Pujaba. जो भी सत्य आप बात नहीं करना चाहते हैं उसको नजर बनाओ देते हैं। I shared. It's like if you argue, you know, like on you know, social media or something like that, right? They just call you a troll. Yeah. सोशल मीडिया में क्या होता है जब किसी कोई बहसबाजी लाता है तो उसको ट्रोल कर दिया जाता है। Right? So if you're proving them that they're speaking some nonsense or doing something wrong, you say, oh, he's just a troll. तो वहाँ अगर ये साबित हो जाए कि कोई फालतू बकवास कर रहा है तो उसको ट्रोल कहा जाता है। This is just Prajapa. ये सब जो है प्रचल फवादी। No, it's your guru's instructions. ये आपके गुरु के निर्देश। And the follower is there in the ISKCON ashram, ISKCON Delhi, and he knew that I am unsatisfied by the GVC, and You're what? I am dissatisfied by the GVC. The That's GVC. Prajapa, man. How are you saying that around? So he was trying to take advantage of it. And what happened? So he was trying to take advantage of it, and he wanted me to join their camp, means Narayan Maharaj camp. Achha. In trying to convince me. So I was saying that I am ready to accept everything what you are saying, but first answer me these quotations. Why Prabhupada has said very How can you strongly. accept what they're saying if they're saying exactly the opposite of what Srila Prabhupada is saying? There's nothing. I'm not ready to accept anything from you people. You're apparatis to Srila Prabhupada, and you're disregarding his instructions. I don't know, look at your face. I'm not going to consider anything you people have to say. तो मुझे बता रहे हैं कि Nonsense. प्रभुपाद के निर्देशों के पूरी तरह से विरोध में प्रभुपाद के निर्देश के प्रति ये अपराध कर रहे हैं। प्रभुपाद के प्रति अपराधी है। मैं ये जो भी बातें करना चाहता हूँ मैं सुनना तक नहीं चाहता। जो भी फालतू बातें कर रहे हैं मैं तो मुंह तक नहीं देखना चाहता जो भी बातें करना चाहते हैं। So if someone doesn't preach what Prabhupada's preaching according to his books and teaching, I have no interest in them. I don't want to see their face. I don't care what your philosophy is or what you think you know. It's irrelevant to me. अगर कोई वो बातें नहीं करता जो प्रभुपाद कर रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सिद्धांत हो रहा है मेरे लिए उन बातों का कोई अर्थ नहीं है कोई मतलब नहीं। And I'm going to do my service within Mahaprabhu's, you know, Srila Prabhupada's authorized in Mahaprabhu's parampara. These people are not authorized in Mahaprabhu's parampara. They're not part of Mahaprabhu's parampara. महाप्रभु की परंपरा से अधिकार प्राप्त हुआ है। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त हुआ महाप्रभु की परंपरा से कोई अनुमति नहीं है। Did Prabhupada put their names in the parampara? प्रभुपाद ने लोगों का नाम डाला है परंपरा में। Prabhupada put one name in the parampara. प्रभुपाद ने परंपरा में से एक नाम डाला Himself. खुद का। Isn't it? So and even Prabhupada said, if you know, if even his guru said, Bhaktisiddhanta Saraswati, if I saw if anyone was actually qualified, he would have said at the time. यहाँ तक कि सिद्धांत सरस्वती ने कहा था अगर उस समय कोई योग्यवान होता उन्होंने भी किसी को Actually, he said, none of you are my disciples. असल में श्री भक्ति सरस्वती ने कहा Because none of you are following what I'm asking you to do. किसी ने वो पालन नहीं किया जो मैंने पालन करने को कहा।
That's Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So what are they going to spin around when he already just said, none of you are my disciples and followers? वो ऐसा क्या पेश कर सकते हैं जो श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर पहले ही कह दिया कि आप ऐसे कोई योग्य नहीं है. Now I have to listen to your rendition of what you think the parampara is telling. अब आप सोचते हैं मैं आपकी प्रस्तुति को सुनूं जो आप बता रहे हैं कि परंपरा. And then you don't recognize Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, and you don't call him Prabhupada. I have nothing to do with him. और अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को यहाँ तक कि आप उनको प्रभुपाद भी नहीं कहना चाहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलना चाहते हैं. That means they don't realize and understand and accept Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, as the direct manifestation of the, parampara from Sri Chaitanya Mahaprabhu. So they don't accept that, they don't realize that. What are they going to say that I need to hear? तो अगर वो ये साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाप्रभु के परंपरा के प्रतिनिधि हैं, तो वो जो कुछ भी बातें कहेंगे उसमें क्यों स्वीकार करना? Who cares what is your opinion? क्या फर्क पड़ता है वो क्या सोचते हैं? You didn't come and fully surrender to Srila Prabhupada. That means you don't realize who is Srila Prabhupada. So you have no qualification. You have no authorization. आप श्री प्रभुपाद को आपने आकर शरणागत नहीं किया, आप उनको समझ नहीं पाए, इसका मतलब आप परंपरा को समझ नहीं पाए, बस कोई योग्यता नहीं है कुछ भी बात कहने की. And then it's a Prabhupada Gurudev said it's an offense to leave the mission and instructions of your guru. और प्रभुपाद और मेरे गुरुदेव ने बताया कि इस्कॉन को छोड़ना, निर्देश को छोड़ना अपराध Or aparad, Vaishnava aparad. गुरु अपराध है, वैष्णव अपराध है. So what is the end result of this Maharaj, these Maharaj's instructions, right? Is that they all leave the mission and the instructions of their guru. That's the end result of listening to that Maharaj, is they all give up the mission and instructions of their spiritual master and they commit the guru aparad, Vaishnava aparad. That's the end result of your preaching, that they reject and leave the institution and instructions of Srila Prabhupada. Look at the results. तो ये महाराज का विचार देखिए, ये भक्त अपने गुरु के संस्था को, उनके निर्देश को त्याग करके उनके अपराध करके छोड़कर उनके पास आते हैं. तो ये महाराज का प्रचार है. And then you're criticizing Srila Prabhupada, और साथ ही साथ वो श्री प्रभुपाद का saying he only gave ABCs. वो कहते हैं श्री प्रभुपाद ने केवल ABC दिया है. So you're minimizing and you're criticizing, तो श्री प्रभुपाद को कम किया जा रहा है और and you're causing these people to commit guru aparad. और यानी ये सारे भक्तों को भी गुरु अपराध करवाया करने के लिए मजबूर So किया what जाता है. jnana are you going to give that's going to overcome the reaction of that guru aparad? तो कौन सा ऐसा ज्ञान देंगे आप इन लोगों को जो इनके गुरु अपराध से मुक्ति दिला पाएगा? Even the follower also told me that Prabhupada didn't give everything. Like that. He was Blind leading the blind. मेरे So now they're all going to help lead the blind. उन महाराज के शिष्य भी कह रहे थे कि प्रभुपाद ने केवल ABC दिया है. It was अंधा है उसके जो पालन करने वाले भी वो भी कहते हैं. So, they're going to hell and they're like, you know what, before we go to hell, let's just all act like manjaris in separation. You know what I mean? We're going to hell anyway. वो कह रहे हैं तो वैसे भी हम सभी नरक जाने वाले हैं. नरक जाने से पहले हम सब थोड़े गोपी और मंजरी का होने का थोड़ा नाटक करेंगे. Why not? Why क्यों not? नहीं? If you're going to concoct so many things, why not this one also? You know? इतना सारा चीज़ हम बनावट कर ही सकते हैं. इसको भी थोड़ा बनावट कर ही लेते हैं. Why stop now, you know? अब क्यों कहना रोकते हैं? What will stop you now? कौन है आपको रोक You lost your brain. और दिमाग खराब हो चुका है. That's my understanding, that's my faith. ये मेरी समझ से नहीं है. I'm going to try to do my best to practice according to Prabhupada's books and teachings and help other people to have faith in Srila Prabhupada and his books and teachings and his mission and his instructions, and whatever we all deserve at the end of that, so be it. और मैं अपना श्रेष्ठ करना जारी रखूंगा श्री प्रभुपाद के निर्देश को पालन करने का पूरी श्रद्धा के साथ. और जिन लोगों को श्रद्धा है उनकी भी मदद करूंगा श्री प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं को समझने में. और अंत में जो भी प्राप्त होगा वही हमारा है. I was going to quote a book distribution today, but I'm just wondering, which color dress
if I'm a gopi, which color dress am I more attracted to? The blue one, or the green one, or the yellow one? I was going to go out and preach and distribute books, but I'm kind of deciding which dress color I like if I'm going to be a Manjari or a gopi, you know. मैं श्रील भगवान की किताबों को बाहर आ जाके पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गोपी के रूप में पढ़ना है। तो किस तरह का मुझे साड़ी या किस तरह के हमें उस कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि मैं उस भाव के किताब। So am I making flowers, or am I using a chamara? Is right, you know. And then you're going to sit there in Tamagun and Rajagun and speculate which color dress and what savior you're going to do in Goloka Vrindavan. और वहाँ से आप बैठ के मनोरंजन करने वाले हैं कि कौन से कलर कौन से रंग का कपड़ा या कौन सा चीजें इस्तेमाल करके मैं गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा कर रहा हूँ। Right. And then you're going to think, yeah, I had this girlfriend and she looked good in blue, you know, so maybe I'll look good in blue. मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो ब्लू रंग जैसा है, तो मैं भी अगर ब्लू रंग का कपड़ा पहनूं तो वो शायद अच्छा लगेगा। It looked good on her, maybe it'll look good on me. You know? उनके ऊपर अच्छा लगता है, ऐसा मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा। Come on, you know. First purify yourself, you know. चलिए पहले थोड़ा अपने First figure out that you're a das. पहले ये पता लगाने का प्रयास कीजिए कि आप एक दास हैं। First figure out you're a soul. पहले ये पता लगाइए कि आप एक आत्मा हैं। It's all going on, Sanatan. सब चल रहा है सब। At last I asked him that why don't you leave ISKCON ashram and join their ashram? So he Who? came, that the follower of They want you to go there? yeah. Why do you go? So I Because you said, you told him, he's like, then I'll consider it. because it was not authorized by They Prabhupada. didn't speak in a way to make you consider it? You weren't convinced? पूछ रहे हैं कि आप उन्होंने आपको इतना आश्वस्त नहीं किया कि आप विचार करें उनके साथ बातें करें कि उन्होंने आपको पर्याप्त आश्वस्त नहीं कर पाए। This is the problem. ये समस्या है। Because if we don't provide an alternative within Prabhupada's society, these people will either become Ritviks, they'll go into Maya, or they'll just join some Babaji or some other outside organization, right? And then that will cause them to commit aparadha and show Prabhupada. तो यही समस्या है। अगर हम प्रभुपाद की संस्था के अंदर ये विकल्प लोगों को ना दें, या तो वो ऋत्विक बनेंगे या संस्था को छोड़ के बाहर जाएंगे या बाबा जी या माया में जाएंगे या गुरु के प्रति अपराध करके किसी और Prabhupada said, never leave my institution. प्रभुपाद ने कहा है कभी भी मेरी संस्था को छोड़ के मत जाना। I chose to join Ritvik rather than joining them. Huh? I chose Ritvik instead of joining them. I chose Ritvik. Right, but you weren't satisfied there either. वो कह रहे हैं मैं ऋत्विक से जुड़ गया उसके बाद। And then all of a sudden they get you here, and they're like, if it didn't work out with the Ritviks, you can still come to this Maharaj's mat, right? और फिर जब आप वहाँ संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आपको निमंत्रण मिला कि आप इस महाराज के साथ इस मठ में रह सकते Because you couldn't find real satisfaction or shelter with the Ritviks. क्योंकि आपको असल आश्रय संतुष्टि रक्षा नहीं मिला ऋत्विक लोगों से। And then if you didn't meet us, then you'd be like, okay, there's nothing for me to do here. और फिर अगर आप हम लोगों से नहीं मिलते तो आप सोचते कि अब यहाँ करने I का don't really fit in there. मैं इन लोगों के साथ फिट नहीं हो सकता। And then if I go back to this previous temple, then you have to become, you have to join the Third Reich. अगर आप अपने पुरानी मंदिर में आपको जाएंगे तो वहाँ पे जो नीति नियम पालन करवाए जाते हैं वो उसमें मुझे जुड़ना पड़ेगा उनके आदेश को पालन। Even Ritviks also believe that they fell from Golok Vrindavan. They fell from a tree and cracked their head. And they got no brain. They get about Goloka Vrindavan. I think their mothers dropped them on their head. ऋत्विक लोग सोचते हैं कि वो लोग पावर से गिरे हैं तो गुरुदेव का पेड़ से गिरे थे और या उनकी माँ ने उनको हाथ से गिरा दिया सर के बल वो जब थे बच्चे लोग गिरे
It's like simple arguments and they're like, you know, they can't even figure it out, you know what I mean? It's like you're supposed to be a follower of Prabhupada, right? Okay, how do you handle this instruction from Prabhupada? Oh, you know, and what are they also to say? Don't, you can't think about that, that's pajama, that's offensive to the Ritvik camp, that's an inconvenient quote. Right, so how is it you go to all these places and there's inconvenient quotes? इन सारे जगहों पे आप जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हर जिस चीज पे गंभीर चर्चा वाली बातें हैं उसको प्रजल कहा जाता है. You go to ISKCON, inconvenient quotes. Then you go to Ritvik, oh, those are inconvenient quotes. Then you go to Gaudiya Math, oh, those are inconvenient quotes. Instructions from Prabhupada. तो आप जब ISKCON में हैं तो वहाँ बताया जाएगा ये बातें जो है बातचीत नहीं की जा सकती. We're the only place you can go to be able to accept and understand all the quotes. एक ही मात्र जगह है जहाँ पे आप जाके सारे सत्यों को समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, वो जगह होने की जरूरत है. That's the difference. That's why Prabhupada has us here. इसीलिए प्रभुपाद ने That's what I was also feeling, that they are believing something, but they don't believe something else. Now they believe something, but they don't believe something else. Exactly. Like everywhere it was going on. Exactly. So when you understand the absolute truth, you can see the flaws in all of their arguments and presentation. They don't like that we can see those flaws, but it's like the sunrise, you know, it's very obvious that this is a flaw, that this is a misconception, this is a deviation, because now you have the proper measuring instrument. तो जब एक बार आप परम सत्य को जान जाते हैं तो ये सूर्य का एक उदय होने के जैसा है. इसके बाद आप ये बहुत सफाई से आप उनके गलतियां या उनके अंदर जहाँ कमी है उसको देख सकते हैं. वो चाहते नहीं आप इन गलतियों को, इन बुराई को देख पाए, लेकिन अब जब आप परम सत्य को जान चुके हैं तो अपने आप आपके सामने ये सारी गलतियां उजागर हो चुकी हैं. These instructions completely destroys the whole Ritvik paradigm. तो ये निर्देश जो है पूरी तरह से ऋत्विक को तबाह Srila Govinda Swami and Prabhupada completely destroys the Gaudiya Math paradigm. श्रील प्रभुपाद महाराज के निर्देश पूरी तरह से गौड़ीय मठ के गौड़ीय मठ के जो बातें हैं उनको खत्म कर देते हैं. And it also exposes the so-called, counseling system and bridge preaching and psychology and pranayama and all this bogus thing as well. साथ ही साथ ये काउंसलिंग सिस्टम, preaching, प्राणायाम, ये सब चीजों को पूरी तरह से फालतू साबित कर देते हैं. In ISKCON, I never got this kind of long class ever, because they will consider more than 1 hour class is time waste. It is too much. It is not needed. They will consider like that only. I never got this kind of long class ever. I'm sorry. And also, I get paid by the hour, you know what I mean? The longer I go, the more money I make, you know? What can I make in 1 hour, you know? इस बार में एक घंटे ज़्यादा क्लास हो जाएगा तो इसको जो है अनुमति नहीं दी जाती. कहते हैं ये समय की बर्बादी की जाती है, 1 घंटे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. तो मतलब मुझे समय की दी, मुझे घंटे ऐसे भेजना, इसलिए मैं जितना लंबा करूँगा उतना घंटे उतने पैसे. Look, the first hour, you guys weren't even here. Let's be honest, your body was here, your mind was totally somewhere else. मन जो है It took like the second or third hour for you guys to figure out something's going on here. What are we talking about here? Thank you for joining us. I saw your body was sitting there for the last 2 hours, but that's great. You finally figured out. Go back. Your astral projections, your mental airplanes, jets. Astral projections, right? Then you come back into your body and it's like, oh, what's going on there? It's a nice discussion. Oh, there's many topics. Nobody talks about those topics. Thank God I'm sitting here. 2-3 घंटे के बाद जो है हमारा मन वापस यहाँ पर आया तब हमें पता चला वो हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ क्या बातचीत हो रही है. यहाँ तो स्वागत है आपका वापस यहाँ.
I feel bad for him, like, I'm like probably the hardest person to translate for, you know, from the planet, you know. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पृथ्वी में सबसे कठिन व्यक्ति हूँ मैं इनके अनुवाद करने के लिए। So that's why I had to pull him out of Pune because he was becoming like a, you know, like a Nazi. He was joining the mind police, you know. He went from like a sweet, like nice little brahmachari, like then he was just like, we are militant, we are. Don't think like that. I thought it was like his brother or something. You know, like maybe he had like a twin brother or something. I didn't know it was the same guy. And I'm like, where did you go? Who were you talking to? And he started saying, you know, Ashutosh's mother. I said, no way. No way she teached you and put you in this consciousness. Like, you definitely talked to somebody else. Well, I went down to the Pune temple. I talked to all the Gyanis down there. And they did like some operation on my brain. They took out like the front part of my brain. The left side of my soul. I'd be a great advocate for that temple, wouldn't I? To get everybody to go there, wouldn't I be a great promoter of that temple? Everyone would be lining up to go there, you know? Bring your own military boots, you know? We are militants. But we do devotee care. It's like AIs who can somehow show emotion. Welcome. We love you. How can we serve your soul? And you go on the backside, just like a bunch of wires, some computer screws and stuff like that. We are opening our heart to you. We care about you. Do you believe us? Oh, this is bad. I'm going to hell now. You guys should get up while we can get out. Pune, we got options for you guys. Printfix, we get connections. We get Pune, we get Printfix, we got the Maya, we got Siberia. We got all kinds of places. I remember one time someone asked Srila Swami, Maharaj, can you give the class? Maharaj was like, fine, I'll give the class. He said, but you have to finish in 1 hour. He said, don't ask me.
So if Krishna's making me speak something and Krishna wants to say something, then you're going to stop Krishna from speaking after 1 hour? Don't ask me. उन्होंने कहा अगर कृष्ण चाहते हैं कि मैं कुछ बातें कहूं आप आकर मुझे रोकेंगे कृष्ण चाहेंगे कि मैं आगे बोलता रहूं और आप चाहते हैं मैं कृष्ण को मना करूं. One time I was at ISKCON temple in Boston, and one devotee was giving a nice class, and it was very kind of, Prabhupada's books and teachings. He was trying, and I was appreciating his effort. And all of a sudden he said, "Oh my God, I have made such a serious offense." And I'm like, wow, what is this guy going to admit to, And then he said, "I went 1 minute over the allotted time for giving the class." And then he stopped, उन्होंने कहा एक बात इस्कॉन बॉस्टन के बहुत एक वरिष्ठ भक्त आए और वो वहाँ पे क्लास दे रहे थे और उसके क्लास चल रहा था क्लास में उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है मुझे लगा ऐसा कुछ जरूरी बात बताने वाले हो तो उन्होंने कहा समय दिएगा इसलिए 1 मिनट में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं. And then everyone gets runs out of the class. And I'm like, wow, these guys are fired up, And then they all got in Western clothes, and then they went in the prasadam room and talked to Jalpa for like 1 hour before the prasadam came. उसके बाद जब वो लोग वहाँ बैठे थे सारे लोग बाहर गए और उन्होंने जो है अपने पश्चिमी देशों के कपड़े पहनावे वो उन्हें पहने प्रसाद के पहने प्रसाद आने के 1 घंटा पहले सभी लोग पूरा प्रेजेंट पाते थे. He couldn't say 1 more minute of Hari Katha because then they wouldn't have a full hour talking nonsense waiting for the prasadam to come. एक मिनट उन्होंने क्लास लगाने दिया उन्होंने कहा उसके बाद 1 घंटे जाकर सभी लोग प्रेजेंट पा रहे थे वो भी पश्चिमी कपड़ों में. Okay, that's way enough right now. आज के लिए पर्याप्त हो चुका है. But it's partly my fault because I got in the Jiva Tattva issue. लेकिन अवश्य मेरी गलती है कि हम जीव तत्व विषय के अंदर फंस गए. And that opened up the door for these other things. So please excuse me. और इसने अलग अलग विषयों के प्रति भी दरवाजे खोल दिए तो फिर मुझे But I think these points are very important to come out also. लेकिन मुझे लगता है ये बातें बहुत जरूरी थी बाहर आने के लिए. Because if you don't hear a strong presentation that really is convincing according to Prabhupada's books and instructions, then Maya will just attack you in all the different ways, sending all these different types of devotees and everybody acting in a particular kind of way, When they said, okay, you can't come around ISKCON, all my godbrothers, many of them wrote me and said, oh, now you can come with us, and I just said, I'm not interested, I'm just following Prabhupada, Srila Govinda Swami, and they never wrote me again. As soon as they saw that I wasn't going to use this as an excuse to go to some other camp or some other temple, then they have no use for me. Right? So they don't really care about me as a person. They just wanted to use me for whatever their purpose was, you see? So once I just said I'm just sticking with Prabhupada and Gurudev's instructions, then they have no use for me. So they didn't write me again, they didn't call me again. So this wasn't like they really liked me, care about me, and this was just trying to manipulate and use me according to, how they think they can use me for their own benefit, right? और यही जब इतने सारे दरवाजे खुले इन विषयों के प्रति तो ये बातें आगे बढ़ी तो ये इसीलिए इन सारे विषयों पे तत्वों पे सिद्धांतों पे शिक्षाओं प्रभुपाद ने क्या शिक्षाएं दी इनको जानना बहुत जरूरी है वरना बहुत सारे अन्य माया के रूप में कोई भक्त आएगा कोई इन विषयों पे आपसे बातचीत करने लगेगा हमें पर सही जानकारी नहीं होगी तो माया हमें ठग सकती है और इसीलिए जब इस्कॉन में मुझे ये सब बातें करने के लिए बंद किया गया तो मेरे गुरु भाई ने मुझे बुलाया लेकिन मैंने बताया मैं प्रभुपाद और श्री गुरु में से महाराज की शिक्षाओं पर बातचीत करना चाहता हूँ तो उनसे मुझमें कोई रुचि नहीं थी और मैं उनके लिए पूरी तरह बेकार था तो मुझे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे. And I asked all these questions. I got all this information from Srila Guru Govinda Swami. And so, I'm very clear on what he instructed, and everything was consistent with Prabhupada's books and teachings. I have those 2 gurus, in parampara, authorized parampara. I don't need any of these other people, other situations. मैंने
मैंने श्रील गौरव साहब महाराज के सारे पूछे उनसे मैंने जानकारी ली मेरे को मालूम है श्रील गौरव साहब महाराज तो मुझे और किसी भी अन्य ऐसे उनके जैसे व्यक्ति ने यहाँ से कोई जरूरत नहीं कि मेरे पास ये व्यक्ति है Prabhupada said, don't associate with them because they can't help you. प्रभुपाद ने कहा था उनका संग मत कीजिए क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर सकते But they're quite capable of hurting you, harming you. लेकिन वो बहुत योग्य हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए So they can't really help you, but they very much can hurt you, harm you. वो आपकी मदद नहीं कर सकते लेकिन वो बहुत ही ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं Why don't they follow that instruction? वो सारे लोग ये निर्देश क्यों नहीं पालन कर रहे हैं Thank you very much, everyone. Krishna Katha ki jai. Prabhupada ki jai. Govinda Swami Srila Gurudev ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Gaura Premanandi. Hare Krishna. All right, little bit every day. Live every day.